Namaskar. Welcome to another edition of Navima's podcast. So today we have a very interesting and provocative topic that we had chosen to discuss. So as a lot of people know that today is 11th January. Today there has been an event. The Prantishtha Divas ceremony is being organized and it performed today in Ayodhya. So the Ram Temple is a kind of a lifetime event for us, those who are alive with this juncture. And 1 year of Pran Pratishtha is being celebrated in Ayodhya with Yogi Adityanath being there in the Ram Temple. So we had a thought in mind that there was an article written by Mr. Abhijit R. Mitra, well known as AIM. So we had discussed. So it's been 1 year of Ayodhya consecration, temple consecration, and a thought came to our mind that the article written by AIM. So I have also put the link in the description in the chat itself for people to go through. But I'll just show the article to everyone, and then we will start with our discussion. So this is the article that is going to be our bedrock for this discussion. Hinduism will be finished in another century. Columnist Abhijit Iyer Mitra predicts, read why he thinks. So I had read through the article. Hello Abhijit, namaskar. Jai Shri Ram, Vande Namaskar. Mataram. Jai Sri Ram. So when I spoke to you regarding the topic that we have chosen for this week's podcast, Right, so you knew about the article, correct? It was written 3 years ago, 8th August right, 2021. right. And then we And discussed it also in various platforms. yes. So there was a lot of controversy, a lot of podcasts, a lot of people shared their opinion, including Kushal Mehra, including Sanjay Dixit, and many other commentators on the Hindutva fold or the Indic fold. But why I decided, let's talk about it, is that it's been 3 years, and this was a prior event to the Ram Temple consecration. So I would like you to first give us your opinion, your commentary on the consecration of Ram Temple and establishment of Ayodhya Kshetra, the Ram Temple Kshetra, and the points raised by Mr. AIM and how they compare an analysis after 3 years of the article. Has anything changed after the Ram Temple construction that we can say that Mr. Iyer may not be right in his conclusions? Please. Mm, Right. Yeah. So obviously, from a civilizational perspective, the consecration of Ram Temple, our the Pran Pratishtha of Prabhu Sri Ram, it was obviously an event of civilizational importance, right? And how important it is, and how can it affect the geopolitics as well as the politics of religion, right? So to say, I mean, obviously there is a part, there is a political part associated with these religious conflicts and religious sort of dynamics, um, mutual as well as exclusive, that we cannot ignore, right? In the broader context of how a society, how nations, how our world is being run, right? How humanity is sort of understanding these different sort of ideas called religion, and how humanity is evolving, um, uh, moving forward, as well as sort of changing the different aspects of Abrahamic as well as various pagan religions, especially Hinduism, right? Yeah, strictly saying we cannot call it Hinduism, but let's call it now Sanatana Dharma, right? It's a sort of a set of eternal codes which are derived from the function of nature, and it claims that if we sort of adhere to the path of dharma, it will lead to sort of a stable, prosperous,
and progressive dynamic society. So that's the claim of our Sanatana Dharma. There are various aspects, there are various books. I mean, we have a huge library created just to understand what these dharmas are. And there are obviously some arguments, discussions that have been going on since the time of Veda as well as our Upanishad. Different puns that were born and still not over yet. So now for the Pran Pratishtha of Prabhu Sri Ram, it is obviously of civilizational importance because probably for the first time, it has so happened that um, so-called disputed Islamic structure have been demolished by the pagans, um, who do believe that all gods are equal, and there are different paths to sort of reach divinity. So this is in the context of broader history and geopolitical perspective. This was for the first time that a disputed Islamic dhacha was demolished, and then on top of it, a mandir was again sort of we rebuilt a temple. The pagans rebuilt a temple, which used to exist before it got brutally destroyed by the Islamic invaders. um and because this was the first time, I mean, on the probably in the context of this Pran Pratishtha, our respected Bijet Ayar Mitra ji wrote this article, and the article inherently had a very dystopian tone, in the sense that I mean, the way he saw Hinduism, he claimed that that kind of Hinduism, probably he alluded to some sort of urban Hinduism. I don't know. It was the sense was there that as if he's talking about contemporary political urban Hinduism that is going to be destroyed in 100 years. Maybe some part of it is true because politics is a contemporary subject. Dharma is eternal. So while I agree with Abhijit R. Mitra that some political aspect probably may die and become irrelevant in the coming century, but out of that ashes, a new kind of Hindutva politics probably would be born, right? Just the way, like 50 years ago, even organizations like RSS, for example, or even Janta Party, right? Their version of political Hinduism was a tad bit different than the sort of Hinduism right now, which has undeniably have become a little more aggressive, assertive, positive, less atavist, and this is looking forward to sort of with a missionary ambition to spread into different areas of Africa, uh, some part probably western coast of US, right? That is also collaborating with the Europeans for the pagan revival of the pagan European history, so to say. So yeah, so to put it in a few words, and to set out the sort of context of our discussion that we are going to discuss in the coming 1 hour or so, I agree that maybe some political aspect of this Hindutva or Hinduism is probably going to become irrelevant in the coming century, but the eternal dharma, right, will still be as much relevant as it is now, and as it was in the time of Upanishad, or in the time of Gautam Buddha, when sort of Buddhism was sort of chalked out, um, and sort of spread to different part of the world. Yeah. Yeah, so I get your perspective, but uh, I had read the article. Actually, I went through the article in terms of its context and logic. Okay, so you mentioned political Hindutva and Sanatan Dharma. Okay, so can in 21st century can we separate dharma or religion? Dharma is not religion, but still, for the context for the audience, let's assume that dharma is religion. And can we separate the politics from the religion aspect, or are they are intertwined intrinsically?
Yeah, so so about the article, I think a couple of more aspects that I forgot to sort of bring up, which we should quickly discuss. One of his concerns was that the demography is literally shifting, then the demography of Hindus are shrinking in the independent India, and then there is rampant conversion which is going on, and as a result, because of the low fertility rate from the side of Hindus, as opposed to, let's say, comparatively higher fertility rate for the Muslims, there will be a time where when the Islam will be dominant even in the existing independent India. This was one of his main concerns. And what else was there? I think there was one more important point. Yeah, so one more important point was about the temple. Key government already is exercising power over over the all the famous temples that Indian government, in the state, and our central government are sort of controlling, as opposed to, let's say, madrasas or famous masjids or the churches, over which governments have no control, right? So that was one more point that Abhijit Mitra was addressing in this article, and we'll take these points one by one as we sort of move forward, right? Now, your next question was like, can we separate politics from Politics. religion and religion from politics? So in the Mahabharata, in Shanti Parva, there is a very famous quote, uh, that that politics. Yeah, so the quote goes like this: "Ki the dharma for short term, for a short period, takes the shape of a politics, and politics over a long term eventually takes the form of dharma, right? So this is how at least our ancestors look at dharma and then rajniti, right? um, so yeah, probably from an Indic perspective, it is very difficult to sort of distinguish between the two. And also, if we think about something which is dharma, Sanatana Dharma, why would a specific segment and a very substantial sort of big chunk of our life, which is Rajniti, which is politics, be sort of left out from the domain of dharma, right? So, unlike the European understanding of politics, which they wanted to keep secular, in the sense that the church and the state would not sort of merge in order to exercise control over the population. We don't think of it that way, because we don't think of using propaganda, lies, deceit, as an inherent tool to propagate the religion, right? Religion or dharma, whatever you say. If we are we're discussing a set of codes which are eternal, it cannot be based upon lies, right? Because if you try to keep lies at the foundation, then in order to sort of move forward, you have to create more lies, right? And in this tower of lies, what happened eventually, it leads to a very unstable society, right? So obviously, one of the fundamental aspect of building any civilization or moral code is like you have to adopt truth and not like false propaganda, just like Abrahamic religions inherently does, and they are not shy of using lies to propagate their religion. Our dharmic aspect don't believe in such way of propagating our belief. So if this dharma is sort of based on truths, then it is good ki you are basically emerging, trying to sort of extract politics out of these true realizations, right? And true facts. So yes, I mean, Rajniti or politics is a part of dharma, our dharma as well. Rajniti is in fact a contemporary short-term dharma, right? That a society sort of adopt for that specific period, depending on the historical and societal context, and obviously geopolitical context. And probably in the coming 50 years, you will see a different kind of Hindutva politics, which will also be our part of Dharma, but which will be local in space and time, in the sense which will be
which will be contextual to that episode of history, and it may vary depending on the location as well. Maybe the Sanatana Dharma guide, the aspect of Sanatana Dharma guiding, let's say, our subcontinent will be fundamentally different than the aspect of Sanatana Dharma guiding, let's say, USA, if it is propagating there, or in Europe, where they are trying to do a pagan revival, right? Yeah. Yeah, okay. Understood your concern. So let me give little bit more contextual analysis to this. And in this regard, first I would like to share. I'll unshare the screen, okay, so that I Hmm. can. Let me just remove this. So we have your book, Hindumisia and Right. Hindu Genocides. Okay. It documents 1,000 year of persecution and atrocities committed against Hindus by various invaders, including Islamic, including Christian, and others. Okay, this paints a grim picture, and this paints a grim picture of what we have suffered till now. Okay, and Hmm. uh, how much, how to say, how much resistance we have put up against this, and where we were 1,000 years ago, and where we are now. Right. So, in that regard, I would request the audience. Uh, Let me just share your books details as well, so that people who are interested in understanding the real history of uh, Hinduism specifically. Right. So, this is the book website you can see. So, this is the physical copy I have. So people who are interested in understanding the sufferings of Hindus and learn and understand, and maybe learn how we can resist and how we can reconquer, how we can recover from the loss that we had for 1,000 years, to reconquer them, to understand them, to mount a survival, mount a revival, we need to know the history. So for that reason, this book is an essential part of it. So I would request everybody to go ahead and read the book. The links are there in the description. The link is there also in the chat, so you can go ahead and buy it. Right. And the second part of it. Okay, so I have this specific book you can see here. So this is called Time. This is called Time, Kala Gati, the cosmic flow. So this talks about, so in our Sanatan Dharma, correct? We have a circular, uh, cyclical way of time, where the time goes around and goes around. So bad times comes, good times comes, good time will come, bad time will come. So this suffering and happiness comes in phases, and they will be circling each other in many ways. So for 1,000 years we have suffered, and we are still suffering. As you mentioned, that the beating heart of this Hindu society is the temples, which has, as per Mr. Sanjeev Sanyal, the temples were the banks, the education institutes, the cultural hub, the architectural hub, the artistic hub of Hindu society. Now they have been taken away from the Hindu society for almost 100 years or so. So how do you think that without our temple being with us, without, because they actually finance the temples, were actually the beating heart of it, and that did a lot of good to us as Hindus. Now we don't have them, and do you? And we don't see any movement from Hindus itself, from the Sanatanis, that we want our temples back. And how do we recover that temples from the government? Right. So this question is very much temple specific, right? Yes. Um, No, right. temple specific, in a way that the cosmic cycle of time, where we are going through a bad time. Okay. So, and you mentioned that, okay, no, the doomsday is not correct. So there has been a revival which is going on since 1980s, when the so-called BJP, the party of Hindutva, has come into power. Now they are power in almost 24 states. But almost 80s, from 24, it is now 40 years since we have seen a revival of Hindutva into the politics itself. Right. But on ground reality, we don't see a revival happening. And the
the symbol of that is the temples being run, controlled, and managed by the government. So in that Right. context, I put the temple context. Right. Um, right. I mean, it is true that in Hindu society, right, temples used to be the sort of um, sanctum sanctorum of all the sort of innovative as well as commercial activities. And it used to be the place for R&D, right? It used to be the place for art and architecture. It used to be the place of trade and commerce. um, and you can even get a good sense. So let's say, for I am giving you one just random example. Okay, if you go to Mahabalipuram, so in Mahabalipuram, you can see that near the shore, right, there are like a couple of temples which are pretty much um, facing at the ocean, right? Why? To sort of it was a so the merchants who used to sort of arrive at the coast, they used to sort of um, find out their location by looking at these temples, right? So they used to be work as even the watchtower, so to say, right? The lighthouse. So, uh, sorry. And so, if you go to Hampi, for example, in Hampi there is one beautiful temple uh, of Ganesha, and it is sort of an open temple, so it is open from all the four sides, and there are and it is supported by pillars on top of a sort of a small hill, and on one side there is Ganesha, on the other side there is Ma Parvati. And it is said that there was a mastered merchant coming from some part of the world, and he was very happy with the trade that he was having with the Vijayanagar businessman. He was so happy ki he felt very much lot of sort of grateful, and he built a beautiful temple there. Right, it's small temple but elegant and like classic, you know. So it was not like we used to enforce and enslave people to sort of make temples, right? The all the decorations, all the sort of carvings, all the planning that goes into that went into making these big temples, it must have been spontaneous. I mean, those were not the work of slaves; those were works of fine craftsmen, right? So obviously, from the, I mean, if you look at our old temples, mainly in the south, for example, it they are standing tall and they are still telling us ki these are not statement of slavery. These are statement of freedom, right? Free education, free commerce, freedom of speech and expression. So obviously, temple in our society held a great importance in sort of ensuring that the society is running smooth, and running without any atrocity on any part of the society. And so it's a statement. These temples are statement in themselves. Okay, now, yes, government have started to control the temples. I mean, it started with the British. It is said that during the, and these are historically documented, British noticed that the Hindu society has huge reverence for the pandits and for the pujaris, um, and so it was actually their documented sort of objective to diminish the importance of quote unquote the Brahmins from the society. Okay, and to sort of snatch away the respect and honor, the sense of honor from the Hindu society, um, and to sort of implement that, they created this sort of caste hierarchy and other form of social hierarchy. How? Through sort of meticulous planning, कि इनको थोड़ा अपीज कर देंगे, उनको कम अपीज करेंगे, या फिर लिटरेचर के थ्रू कास्टिज्म प्रमोट करेंगे, सोसाइटल क्लैश और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेंगे. And these are well planned and sort of well documented as well
from the British perspective. And one part of it was obviously control of the temples, because what used to happen कि जब ब्रिटिश अगर कहीं कुछ atrocity किया, the message used to propagate from temple to temple. So again, these were like post offices as well, right? तो तो उनका इसीलिए प्लान था कि पहले टेम्पल कंट्रोल करो, और टेम्पल का जो ट्रस्टी होगा वहां पे अपने लोगों को बैठाओ, जो ऑब्वियसली जो बूढ़ा साहिब या ब्राउन साहिब जो है उनको बैठाओ, और फिर इससे वेल्थ भी मिलेगा हमें, और फिर जो नैरेटिव है हिंदू सोसाइटी में उसको भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. And as a result, I think it started in from Tamil Nadu, from down south. क्योंकि नॉर्थ में तो बड़ा टेम्पल बचा ही नहीं था ब्रिटिश के टाइम पे. And they, I think I wrote an article. I can share it and discuss later Yeah, extensively. yeah. Hmm, तो hmm, धीरे hmm. धीरे वही जो रूल था वो फिर कंटिन्यू होता गया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो जो टेम्पल कंट्रोल वाला जो एक्ट जो लागू हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिड नॉट चेंज इट एट ऑल. इनफैक्ट दे इम्पोज्ड मोर restrictions, and gradually, as a result, now government will have like complete control over the temples, which is unfortunate. But again, yeah, I mean, अभी तो ऐसा हाल हो गया है कि कोई पुरोहित पुजारी जो है वो दक्षिणा भी नहीं ले सकते. मतलब if a pujari is caught, if you are trying to give some pujari a little bit of, let's say, 10-11 rupees, and if it is caught on the camera, the pujari will go to jail. So ये तो हाल हो गया है अभी, है ना. फिर ये सब तो बॉलीवुड का नैरेटिव है ही कि दूध मत चढ़ाओ, है ना. दूध से अपनी जो मूर्ति है उसको वेद मत कराओ, दूध पता नहीं क्या गरीबों को दे दो. ये सब जैसे हम, मतलब टेम्पल से गरीबों के पास दूध नहीं जाता है, एज इफ. तो ये सब तो मतलब इंडिया में चल ही रहा है, और इसका ऑब्वियसली मतलब डीप इम्पैक्ट तो अपने सोसाइटी में पड़ा है. टेम्पल धीरे धीरे इसका रिनोवेशन बंद हो गया. It pretty much all the temple. There was a point in 90s. I think we all remember, right? 90s and even early this century, when we used to go to temple and it used to be so dirty, right? लाइक जो सैंक्टम सेंक्टोरम वो साफ नहीं होता था. रॉटन फ्लावर्स, बदबू आता था. क्यों मेंटेन नहीं होता था. अभी तो धीरे धीरे थोड़ा, क्योंकि मूवमेंट लोग भी जागरूक हो रहे हैं, तो खुद के मतलब हिंदूज आर सॉर्ट ऑफ डूइंग द क्लीनिंग पार्ट. एटलीस्ट वी आर टेकिंग केयर ऑफ आवर सेल्व्स. बट अभी भी यस, मतलब नैरेटिव कंट्रोल करने में तो वी हैव टू रिक्लेम आवर टेम्पल्स, we have to reclaim our temple lands. We have to sort of build the network between different temples. We have to sort of reclaim all the architecture. For example, अभी क्या हुआ, जैसे आप मान लो कि जयपुर जाओगे, है ना. जयपुर में देयर आर, जयपुर को आई थिंक राजस्थान का काशी भी कहा जाता है, बिकॉज जयपुर में इतने सारे टेम्पल है. मतलब जो मेन जो पुराना जयपुर है उसका जो किले का जो घेरा हुआ है, जो दीवार है, उस पे एक बड़ा जो डोर है उसके थ्रू तो गाड़ी निकलता है. बट ऑल दोज, देयर आर स्मॉल डोर्स एज वेल, एंड ऑल दोज आर प्रीटी मच, आई मीन वहाँ पे कोई ना कोई विग्रह को उसका प्राण प्रतिष्ठा करके पूजा किया जा रहा है. सो इवन यू गो टू द किला ऑफ, उसके पास ही आमेर का किला है, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे भी अभी भी अपना बांग्लादेश से एक हमारा काली माता को वहाँ प्रतिष्ठा किया गया था. एंड सो दिस गोइंग ऑन. बट द पॉइंट इज कि ये थोड़ा ओवरऑल, मतलब जो नेटवर्क है टेम्पल नेटवर्क, वो थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया है. और एक बात ये हुआ कि हिंदुओं को जैसे, हिंदू जो ओवरऑल यूनाइटेड जो कॉन्शियसनेस है, it has gradually got detached somehow from the consciousness of the temple itself, from the consciousness of the vigraha, right? तो वो हमें वापस लाना है. और ऑब्वियसली द स्कूल्स एंड द एजुकेशन सिस्टम. अच्छा, और एक बात मैं जयपुर को लेके कहना चाहता था जो मिस कर गया, वो ये है कि बिकॉज
we got detached from the temple architecture. अभी हमारा हिंदुओं का ध्यान कहीं और चला गया है, right? To selfish interest. Now what is happening ki all those Rajput architecture, in which were sort of invented and promoted in and around Rajasthan and a large part of modern day Pakistan, now Muslims are claiming ki these are Islamic architecture. And you see, so for example अपना जो रेड फोर्ट है वो आई थिंक दैट यूज्ड टू बी द किला ऑफ द तोमर राजाज. तो पांडवास भी शायद तोमर किंग थे. और क्योंकि हम लोग क्लेम नहीं कर रहे हैं कि दीज आर तोमर आर्किटेक्चर, ना मुस्लिम्स आर सेइंग कि भाई रेड फोर्ट इज इस्लामिक आर्किटेक्चर. नाउ टू कॉल रेड फोर्ट, नाउ टू से कि रेड फोर्ट वाज बिल्ड बाय शाहजहां इज लाइक सेइंग कि रेड फोर्ट वाज बिल्ड बाय नरेंद्र मोदी. यू सी द पॉइंट. क्योंकि नरेंद्र मोदी क्या करता है, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट एटलीस्ट मतलब दे आर टेकिंग केयर ऑफ कि दे आर रेनोवेटिंग सम पार्ट ऑफ द रेड फोर्ट, they are sort of engaged in sort of keeping the red fort clean. But Narendra Modi did not build the red fort na. So saying again, saying ki Shahjahan built red fort is equivalent to saying Narendra Modi built red fort. And just because we are not claiming that these are Rajput architecture, these legacy, these sort of style of architecture, they are gradually being snatched away. और ये भी हो रहा है कि जो भी आर्टिसंस है उनको कन्वर्ट किया जा रहा है. एंड एज ए रिजल्ट क्या हो रहा है, उनको दिख रहा है भाई ये देखो ये तो इनका पता नहीं 16 पीढ़ी से ये यही काम कर रहे हैं. भाई 16 पीढ़ी पहले तो ये हिंदू थे. अभी तो मुस्लिमों के देर, जैसे अपना फतेहपुर सीकरी का जो किला है, राइट? वहां पे इट यूज टू बी प्रोबेबली, इन ऑल प्रोबेबिलिटी इट यूज टू बी जैन तीर्थ स्थल. ठीक है, जिसको अकबर ने कब्जाया. फिर वहां पे पॉइंट ये हुआ कि वहां पे कब्जाने के बाद जो लोकल इंजीनियर थे, जो आर्ट, उनको मार दिया. ठीक है, और एज ए रिजल्ट क्या हुआ, वहां पे जो पानी का एक रिजर्वर था, वाटर रिजर्वर, वो उसको आता नहीं था वहां के जो मुगल आर्मी थे सो कॉल्ड, कि यहाँ पे पानी रिस्टोर कैसे किया जाता है. एंड एज ए रिजल्ट दे हैड टू अबैंडन द फतेहपुर सीकरी. ठीक है, बिकॉज दे किल्ड द इंजीनियर्स, राइट? तो इस तरह से जो हिंदू जो हेरिटेज है उससे हिंदुओं को धीरे धीरे डिसोशिएट किया जा रहा है, और उसके जगह ले रहा है कि ये अपना अशराफी आर्किटेक्चर है, ये मुगल आर्किटेक्चर है, पता नहीं क्या, ये तुगलक आर्किटेक्चर है. आजकल आप कोची में जाओगे तो कोची का जो आसपास का चर्च है, वो स्टाइल आपको दिखेगा कि ये लोकल स्टाइल है, बट बोलेंगे कि नहीं ये तो अपना पुराना क्रिश्चियन, कुछ नाम बोल देंगे कि कैथोलिक आर्किटेक्चर है. तो ये सब तो चल ही रहा है, राइट? एंड दैट्स व्हाई वी हैव रिक्लेमिंग आवर टेम्पल इज important, because by reclaiming our temple we are reclaiming pretty much everything that are associated with temples. And Indian temples, by their gigantic size, by their intricate craftsmanship, these are unparalleled. ठीक है, आप यूरोप में जाओ, यूरोप में पुराने में जमाने का क्या दिखाते हैं, पैंथियन दिखाता है ग्रीस का. हम लोग के पास दिखाने के लिए अपना इलोरा का कैलाश टेम्पल है, ठीक है, अजंता का केव है. हमारे पास दिखाने के लिए अपना विष्णु स्तंभ है, जो लोग कुतुब मीनार कह रहे हैं आजकल. तो आई थिंक टू रिस्टोर प्राइड in our ancestral heritage, in our civilizational heritage, to pass it on to our matlab next generation, reclaiming temple is of paramount importance. Yes. So I'll come to our next question. So as you mentioned that it is the paramount important for the Hindu society to actually have the temples and restore the function which temples played pre European invasions were there, okay, or maybe pre Islamic invasions which are there. Since 1947 onwards till 2024, we are Mhm. now, okay, it has been almost 70 plus years, okay, where India became independent in so many ways, okay, but the Hindu temples are still under the what you say Siege. under the control of the government of India. Okay, Right.
You are saying that okay, Hindu society has enough capability, enough people who would defend it, but how we are going to defend? So I'm asking the question from the Abhijit Ayamita's perspective, that if we are unable to actually reclaim our temples after 70 years of being independent, living in an independent India, so called, okay, in so many ways, how you are saying that we will survive? Because we haven't able to do for 70 years. How it is that we will do in next 100 years? As in reclaiming temple or Reclaiming reclaiming. temple as a symbolic of overall the revival of Sanatan Dharma, as Right, right, one right. example. Right. So, if you are asking me for specific plans, No, no, I I'm not saying. have I'm not saying. I no, don't no. know. I'm I not do saying have plans. I do have Okay, some specific suggestions. okay. I do have a framework that I can Mm-hmm. sort of, if you allow me 10 minutes, I can sort of discuss it point by point. So in my book, I have written about the six enemies, Shada Shatru, right? Shada Shatru, to say it in Hindi probably. Shada Shatru is like six enemies, right? So in Sanatana Dharma, we have the concept of Shada Ripu or Shada Shatru um, within. So they are Kam, Krodh, Mad, Lobh, Moha, and Matsarya, right? These are Shada Ripu or Shada Shatru, and we must abstain from these sort of shatrus in order to be a honorable, nice Arya, so to say, right? Now, in my book, I have hypothesized or I have proposed sort of through outside. So we have. I'm saying कि Hindu society right now has six enemies within. Kam, Krodh, Modh, Lobh, Moh, Matsarya, as well as Sadasatru outside. And they are, first of all, MNM. MNM is the Maulana Mufti Ashraf class. Second is the Macaulay Putras, right? The Macaulayism being promoted by Indian education right now. Marxism, that want to sort of break India apart into 18 fragments and also subvert the Hindu values in the name of, I don't know, atheism probably, that they pretend, or some occasional partiality towards jihad and Ashrafism. Fourth one is Milods. The Sharia and Christianity influenced judiciary deracinated from Indian values. The fifth one is the media, the media de Lutyens, as in the Lutyens media, section of the media directed by the Lutyens politicians, who are again Macaulay Putras deracinated from Indian values and who are engaged in subversive politics. And the sixth one is missionary, the so-called the Christian missionary, right? And these six enemies we have to sort of take the war head on. So talking about the media, I think we have sort of modern neo-Hindu sort of reporters and media channels that are in a way, in part, they are successfully promoting the Hindu narrative. We have done excellent work in countering Marxism, although it is there in some fragment in random parts, but overall, from the so-called cow belt, you don't see that much influence of the Marxism right now. But we have to do huge amount of work in countering the Maulana Mufti class, Maulana Mufti Ashrafi class, by countering Islam as well as political Islam, by going through their doctrine, what is written in the Islamic scriptures, Qurans and Hadiths, and what are the sort of outcome and the implementation in real world, right? To sort of slay down kafirs, let's say, right? These kind of things. I am not going in detail because those are dark sides. It will impact our reach anyway. Macaulayism. So obviously we have to work on our education, right? You know that matlab it was so the situation of Indian education, at least in primary or हाई स्कूल एजुकेशन में सो बैड कि जो मिशनरी स्कूल अभी भी जो है, मिशनरी जो कॉन्वेंट स्कूल्स है, उनका बहुत दबदबा है. We have to sort of finish that importance and influence of the missionary and the sort of convent education from our society.
um, and then Milords, right? We have to sort of walk to criticize the existing Sharia Wadi and missionary Wadi judiciary, who are promoting these sort of subversive Abrahamic values in the garb of secularism. We have to then counter also the missionary as well, right? The Christian missionary who are engaged in like there are so many means they have adopted, right? If they have data, for example, of hospitals, and the patients, specifically the poor patients who need urgent help, so by promising them कि भाई तुम्हारा ऑपरेशन हो जाएगा तुम कन्वर्ट हो जाओ, these kind of random things are happening and it is reaching even remote villages. They are creating, first of all, different classes among Hindu society, and then they are creating class conflict to sort of conquer land. So we have to actively. I think missionary is far more dangerous than Islamic Jihad right now. I must say, because we need a certain sort of weight, intellectual as well as Purva Paksh of Christianity to counter Christianity. But right now, what Christianity has done, they have adopted our mnemonics, our words, our grammar of spirituality, and they have written their books, Bibles in such a way कि once you go ना, you would not be able to understand भी कौन सा literature पढ़ रहा हूँ. मतलब बीच बीच में अगर दाऊद आ गया, डेविड, या फिर यीशु मसीह आ गया, अदरवाइज दे आर यूजिंग वर्ड्स लाइक परमेश्वर, एकम परमेश्वर, ठीक है, मतलब and all those bhakti, they have adopted all these words in their local translation of old and new testament. सो इसको काउंटर करने में थोड़ा हमें और एक्टिव होना पड़ेगा और एजुकेटेड होना पड़ेगा. सो ये तो गया अपना साढ़े शत्रु वाला पार्ट. मैं और भी पॉइंट दे के रखा हूँ इन ऑर्डर टू सॉर्ट ऑफ अचीव व्हाट यू आर सेइंग. अच्छा, हाँ. Hmm. इसको मैंने लॉग स्केल में डाला है. मतलब लॉग स्केल ऐसा होता है कि लॉग 10 है, so it is 10 to the power 10 time more important than something of the order of 1, which is log 1. ठीक है, तो ये स्केल लॉगरिथमिक स्केल में है, और इस स्केल में सबसे पैरामाउंट इंपॉर्टेंस मैंने डाला है. आई थिंक यू विल, you may have disagreement with me in some places, but let me complete and then you can counter. Yeah, So actually, before you just complete, I just wanted to actually tell. Okay, हाँ हाँ. Dr. Bijeet is reading from his book. So, the plan he is showing how to these six vices that he's talking about. So, if you want to know more about it, the book is the would be a good companion for people who want to understand it. So, like if people want to understand more of it, I would request people to go and buy the book, read the book. So we will have an understanding. Actually, reading and understanding the problem is very important. So maybe one podcast is not good enough to actually get the understanding what's happening and how, as an individual, he has given okay how we can actually make an effort to revive the Hindu society. So his book is a quite a good companion on that. So please go ahead. Okay. Done. Right. Thank you. Yeah. So in the logarithmic scale, log 10 or 10, all these steps that we can take, which are of importance. 10 in the logarithmic log scale is ex-Muslim movements in India. I do believe कि you have to first de-radicalize people who believe कि their sort of Abrahamic belief is superior. उसका पहला स्टेप एक्स मुस्लिम मूवमेंट होता है. Ex-Muslim movement in India, creating ex-Muslim organizations like Mirza Ghalib organization, Mirza Ghalib organization of atheist ex-Muslims, let's say these kind of names, right? Abdul Hamid organization of nationalist ex-Muslims, Jalauddin Akbar organization of ex-Muslim Asrafs, ठीक है, organization of Pasmanda ex-Muslims, Khan Abdul Ghaffar Khan organization of nationalist ex-Muslims, ऐसे organizations बनाओ. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज एंजेंडरिंग अ घर वापसी मूवमेंट इन इंडिया. अगर कोई बोल रहा है कि महाकुंभ में मुझे दुकान लगाना है, बोला कोई बात नहीं, घर वापसी करो, डुबकी लगाओ गंगा मैया में, अम, और फिर बन जाओ, कोई बात नहीं, तुम हिंदू बन जाओ, फिर ये सब दुकान लगाओ, ठेला लगाओ टेम्पल में, कोई प्रॉब्लम नहीं है. देयर हैज टू बी सर्टेन सॉर्ट ऑफ डिजाइन विच वी कैन डिस्कस लेटर, कि कब पता चलेगा कि हाँ ये बंदा ढोंग नहीं कर रहा है, उसका भी टेस्ट होता है.
तो वो भी बाद में वी कैन टेक इट ऑफलाइन एनीवे. तो इंजेंडरिंग अ घर वापसी मूवमेंट इन इंडिया वेन एवर वी गेट ए चांस, ठीक है. Breaking up Pakistan, okay, which is already happening right before our eyes. Just imagine 20 years ago, Pakistan was such a strong nation because India made it a strong nation, not Pakistan itself. It is anyway a very abnormal nation with a normal military state, right? But that is breaking up right now in front of our eyes. Engraving the history of Jogendranath Mandal into the heart of every Hindu. कि जोगेन मंडल ने जो किया था उसका असर क्या हुआ, ठीक है. दलित समाजों पे, नमशूद्र कम्युनिटी पे, ओवरऑल जो सोकल जिनको लोअर जो अम्बेडकराइट मूवमेंट चाहे भी मूवमेंट में जो इन्वॉल्व है उनको जोगेन मंडल का हिस्ट्री पढ़ा कि ठीक है मतलब सोशल मूवमेंट इज इम्पोर्टेंट बट डोंट टेक इट इनटू अ पॉलिटिकल सेपरेटिस्ट सॉर्ट ऑफ ओवरटोन, राइट. डिक्लेयरिंग 8 अक्टूबर एज जोगन मंडल डे, मतलब 8 अक्टूबर में जोगन मंडल ने रिजाइन मारा था पाकिस्तान के. आई थिंक वो लॉ मिनिस्टर या कश्मीर अफेयर्स का मिनिस्ट्री वो संभालता था. तो 8 अक्टूबर को जोगन मंडल डे बना दो, ठीक है. प्रीचिंग एवरी ईयर बिफोर द मतलब लोगों के सामने मोदी आ जाए या 8 अक्टूबर को बोले कि टुडे इज जोगन मंडल डे और ये हिस्ट्री हुआ था, इंस्टेंटली करोड़ों लोगों के पास पहुंच जाएगा ये अबाउट द मिस्टेक दैट जोगन मंडल मेड, राइट. And then of importance 9, I am saying ki ex-Muslim movement in Pakistan. Why? Because it is a little more difficult than starting ex-Muslim movement in India. That's why I'm giving an importance of 9. Giving a call to every nationalist Muslim of India to become an ex-Muslim, as their life and properties are not safe within an Ashrafi Islamist society. जो भी अपना सेकुलर कोट अनकोट सेकुलर नेशनलिस्ट मुस्लिम है उन्हें समझाना पड़ेगा यू आर द फर्स्ट प्रे ऑफ जिहाद, ठीक है. मतलब हिंदुओं के ऊपर वार आने से पहले तुम्हारे ऊपर वार आएगा. ये कश्मीर में हुआ है, बंगाल में हुआ है, साउथ में होता है, केरल में होता है. सो दे हैव टू वी हैव टू टेल देम कि भाई इफ यू आर अ नेशनलिस्ट सेकुलर मुस्लिम you have to do घर वापसी, दिस इज important, ठीक है. एंड दैट्स द ओनली वे टू सॉर्ट ऑफ इंश्योर योर सेफ्टी. इम्प्लीमेंटिंग द यूसीसी एंड एबोलिशन ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये जो लोकल लॉज है उसको हटा के सबको एक लॉ के अंडर लाओ. सब बच्चे एक तरह के स्कूल में पढ़ेंगे. एक तरह का स्कूल इन द सेंस ये नहीं कि मतलब तमिल लोगों को हिंदी पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं है. लैंग्वेज अपने जगह रहेगा and we do enjoy that diversity. Language is not a symbol of separatism in India because it has common origin, right? शिव का अगर डमरू है तो डमरू के एक साइड संस्कृत है, दूसरे साइड तमिल है, इस तरह से हम देखते हैं. बट स्कूल एक जैसा होना चाहिए, मतलब स्कूल में फतावा आलमगिरी नहीं पढ़ानी चाहिए. स्कूल में पढ़ाओ तो तुम हिंदू एस्ट्रोनॉमी पढ़ाओ. इट इज वेरी साइंटिफिक. जो हिंदू एस्ट्रोनॉमी में एंशियंट टाइम में काम हुआ है, इट कम्स विद एरर बार्स भाई, ठीक है. दोज आर हार्डकोर रिगरस साइंटिफिक एनालिसिस, वो पढ़ाओ. फतावा आलमगिरी मत पढ़ाओ, ठीक है. ब्रिंगिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस टू डिक्लेयर मेडिएवल एंड मॉडर्न एज परसिक्यूशन ऑफ हिंदूज एज हिंदू जेनोसाइड. डिक्लेयर करो इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन स्टेट should apologize to Hindus because see Indian no matter who came, जवाहरलाल नेहरू हो जाए, ब्रिटिश हो जाए या अकबर हो जाए, हिंदू जेनोसाइड इंडियन स्टेट ने मतलब मेडिवल एज से परस्यू किया है. सो इंडियन स्टेट मस्ट आस्क फॉर अपोलॉजी टू हिंदूज. उसके हिसाब से फिर टू रिवर्स द जेनोसाइड दे शुड इम्प्लीमेंट पॉलिसीज लाइक जो भी जेनोसाइड की वजह से जो भी आर्ट इम्पैक्ट हुआ है उसको रिवाइव करना. जो टेम्पल, काफी सारे टेम्पल है जिसके ऊपर मस्जिद नहीं बना हुआ है, बट फॉर एग्जांपल देयर इज अ टेम्पल कॉल्ड विजय मंडल टेम्पल. इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय औरंगजेब. अभी तो उसके ऊपर कोई मस्जिद वस्जिद है नहीं, तो उसको फिर रिस्टोर करो. उसमें तो कोई सुप्रीम कोर्ट कुछ कह भी नहीं पाएगा, है ना. और फिर मान लो कि अगर हज सब्सिडी दे रहे हो तो राम मंदिर जाने के लिए, मतलब द पॉइंट इज अगर हमारा राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है, कोलकाता में कोई रिक्शा वाला है, उसको इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर स्टेट इसे प्रमोट नहीं करता है, तो वो रिक्शा वालों को थोड़ा सब्सिडी दो तीर्थ यात्रा के लिए कि वो राम मंदिर घूम के आ पाए. दैट वे ही और शी विल गेट कनेक्टेड टू राम मंदिर डायरेक्टली, राइट. स्कॉलरशिप चालू करो. ये जो भी मतलब बोलते हो कि लक्ष्मी धन योजना जो भी है, इसका वो
जेनोसाइडल ओवरटोन दे दो कि तुम्हारे साथ क्योंकि जेनोसाइड हुआ है इसलिए मैं तुम्हें 1,000 रुपए दे रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे पूर्वजों के साथ जेनोसाइड हुआ है। तो ये जो टू रिवर्स द जेनोसाइड यू इम्प्लीमेंट पॉलिसी। और अगर हिंदू कास्ट में बट रहा है, सो कॉल्ड अगर जाति में बट रहा है, कास्ट के नाम से बट रहा है, द ओनली वे टू यूनाइट इज बाय सॉर्ट ऑफ understanding the suffering and the genocide that Hindu Samaj, Hindu society as a whole has gone through. It will unite the Hindu society. इसका political benefit बीजेपी जैसा कोई पार्टी उठा सकता है, तो इसे इम्प्लीमेंट करो। फिर हाँ, यूनिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल सिस्टम, ये तो बोला था, बताया था। फिर इम्पोर्टेंस मतलब लॉग स्केल में 8 है ऐसे इम्पोर्टेंट चीज़ें, स्टेप्स जो हमें अडॉप्ट करना चाहिए। पासवान द मूवमेंट अगेंस्ट अशराफ्स, क्योंकि जो हमारा जो देसी कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं उनका डबल जेनोसाइड हुआ है। हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ है बट हिंदुओं का कल्चर बच गया है, ऑल्दो इट गॉट अ लिटिल डाइल्यूटेड, but we didn't convert, right? So it was just the dilution of culture and it was out and out sort of physical genocide. But pasmandaओं का जो genocide हुआ है वो double genocide. It was the genocide, physical genocide of life, as well as it was the genocide of culture. मतलब उनके दिमाग से उनका जो पूर्वजों का कल्चर है उसे निकाला गया है। सो वी हैव टू ब्रिंग इट अप कि देसी जो कन्वर्ट है उनका डबल जेनोसाइड हुआ है, एंड वी हैव टू सेट द नैरेटिव की, so that we can set the pasmanda movement against the outsider invading Muslim community, so called the Ashraf community. और पासमानदा इंडिया में 95% है, सो वी हैव टू मस्ट। और ये जो पॉलिटिक्स है, ये 5% अशराफ जो है वो डोमिनेट करते हैं। तो अशराफ का इन्फ्लुएंस अगर इंडियन पॉलिटिक्स से खत्म हो जाएगा तो जो सेपरेटिस्ट मुस्लिम सेंटिमेंट है, आई बिलीव वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। फिर घर वापसी ऑफ बंगाली मुस्लिम्स इन बांग्लादेश, एबोलिशन ऑफ, जो काफ़ी डिफिकल्ट है, एनीवे आई केप्ट इट as one of the steps we have to adopt. Abolition of Sunni Waqf board, ये तो ये बुक में 2-3 साल पहले लिखा था, अब तो धीरे धीरे इसका कीचड़ बाहर आ रहा है वक्फ बोर्ड का। फिर 7 आउट ऑफ 10 मतलब लॉग स्केल में 7 इंपॉर्टेंस वाला एक स्टेप है कि रेजिम चेंज टू एस्टाब्लिश डेमोक्रेसी इन चाइना। थोड़ा प्रेशर कम होगा। चाइना इज अगेन वेरी, वो बोलते हैं कि हम लोग सिविलाइजेशन स्टेट है, बट वो नहीं है, वो थोड़ा एंटी सिविलाइजेशन है। तो चाइना अगर थोड़ा फिर से पेगनिज्म की तरफ, मतलब सनातन की तरफ झुकेगा, तो वो हमारे लिए भी फायदेमंद होगा। फिर 6 में आता है चेंजिंग द हिस्ट्री सिलेबस, जो अब तक लार्ज स्केल में हुआ ही नहीं है। इंक्लूजन ऑफ टेम्पल डेमोलिशन एक्टिविटीज इन द सिलेबस, ये जो अशराफों ने जो किया था वो बुक में डालो। इन व्यू ऑफ कुरान एंड अदर इस्लामिक स्क्रिप्चर्स इन हिस्ट्री सिलेबस। ये मत बोलो कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड होके इन्होंने मंदिर तोड़ते, नहीं, बोलो कि स्क्रिप्चर में लिखा गया है, इसलिए दिखाओ कि ये इस्लामिक स्क्रिप्चर के साथ ये रिलेटेड है। इतना बोल्डनेस मतलब इंडियन डिस्पेंसेशन, पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन पे होना चाहिए कि ये स्टेप ले, वो हदीत उठा के डाले कि हाँ, इस तरह से काबा तोड़ा गया था और ये इंस्पायर किया था महमूद गजनवी को टू डिस्ट्रॉय द सोमनाथ टेम्पल। ओके। फिर 5 में आता है मेकिंग इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनली हिंदू राष्ट्र। ये 5, ये पैरामाउंट इंपॉर्टेंस में इसलिए नहीं रखा क्योंकि अगर समाज, पूरे सोसाइटी में सुधार नहीं आएगा तो इंडिया को अगर सनातन राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र कुछ भी बना लो, ये ग्राउंड रूट लेवल पे इतना इफेक्ट नहीं कर पाएगा। फिर रिक्लेमिंग हिंदू नेम्स ऑफ इंडियन टाउन्स एंड सिटीज, रिक्लेमिंग बॉलीवुड, ठीक है। 4 में मैंने रखा है रिक्लेमिंग ऑल डिस्ट्रॉयड हिंदू टेम्पल्स अलॉन्ग विद काशी, मथुरा एंड अयोध्या। 3 में है रीडिस्कवरिंग हिंदू हेरिटेज एंड कंटिन्यूटी ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड लॉजिक। तो जो भी मतलब इंडिया में साइंस का एक परंपरा रहा है और इसका एक कंटिन्यूटी रहा है, ठीक है। इंडिया एस्ट्रोनॉमी, मेटलर्जी हो जाए, अपना जो लिंग्विस्टिक्स हो जाए, ग्रामर हो जाए, है ना, ये सारी चीज़ों में इंडिया का एक सिविलाइज मतलब एजुकेशन में भी एक कंटिन्यूटी रहा है। और इट इज़ आवर ड्यूटी एटलीस्ट, मतलब हमारा जनरेशन, क्योंकि वी आर वेकिंग अप, इट इज़ आवर ड्यूटी कि वो मतलब एजुकेशन में वो जो कंटिन्यूटी ऑफ एजुकेशन जो है वो दिखा दो, आंखों के सामने रखो कि इंडियन एस्ट्रोनॉमी इतना कुछ करके गया, वहाँ से यूरोपियन एंड अमेरिकन एस्ट्रोनॉमी इनफैक्ट इन्फ्लुएंस हुआ। फिर अभी जैसे यूएस काफ़ी आगे बढ़ चुका है,
इन एक्सपेरिमेंटल एंड थियोरेटिकल एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स फॉर एग्जांपल. बट ये सब चालू, ये सब पेगन आइडिया से हुआ था. ये कंटिन्यूटी एटलीस्ट दिखाओ. जैसे उज्जैन पहले अपना जो पूरा प्राइम जो मेरिडियन. हाँ, जो लॉन्गिट्यूड है वो अपना उज्जैन से होके जाता था. उज्जैन में एक मान मंदिर था, विच इज मान मंदिर मतलब एस्ट्रोनॉमी का एक टेम्पल था, या फिर उसे तुम आप कह सकते हो कि वो एस्ट्रोनॉमी का एक रिसर्च सेंटर था, जहाँ से कैलेंडर बनता था, जहाँ से सेलेस्टियल जो भी मूवमेंट है ऑफ द प्लैनेट्स, ऑफ सैटेलाइट्स, ऑफ अपना जो स्टार्स है, वो वहाँ से बेसिकली ऑब्जर्व किया जाता था. ये कंटिन्यूटी और जो जो रिकॉर्ड है, जो जो हमारे पास काफी सारे, जैसे सूर्य सिद्धांत हो गया, आर्यभट्टीय हो गया, बराहमीर का काफी काम है, पंच सिद्धांति का हो गया, ऐसे आई थिंक 18-20 बुक तो मतलब डायरेक्टली मैं कोट कर सकता हूँ. और अच्छे अच्छे बुक है, मतलब दोज आर साइंटिफिक बुक्स. They discuss like formula, they discuss trigonometry, geometry, some part of sort of numerical calculation series में, जैसे टेलर सीरीज जिसे बोलते हैं, उस तरह का कैलकुलेशंस सारे बुक में दिया हुआ है. उसको लोगों के सामने लाओ कि भाई ऐसे कैलकुलेट करते थे हमारे पूर्वज, है ना. एंड दैट इज So इम्पोर्टेंट टू सॉर्ट ऑफ. yeah, so I have this book. Let me just actually show you. हाँ हाँ. So this book, this Kal Chakra book, has this calculations of the yugas. So it राइट. has billions in terms of its numerical values. So what you are talking about is something which is actually I'm going to review this book as well. This book is very हाँ हाँ. important. Time, Kal Gati, the cosmic flow of time and history. So in the context of Sanatan Dharma, history and time are intermingled. They are intrinsic to each other. They are not separate. In a way, in an Abrahamic way, history and time are two separate concepts, but not with us. Yeah, please go ahead. राइट. And matlab with rigor, our books like Surya Siddhant and Aryabhatti, they have discussed for example, जैसे दिन बोलते हैं, डे, कितने तरह का डे होता है. Our ancestors found there can be at least three kind of day, कि सौर दिन, कि सूर्य का जो पीरियोडिसिटी है उसके, चांद्र दिन, कि जो चांद का है उसके हिसाब से, एंड नक्षत्रिक दिन, मतलब जो जिसे साइडेरियल डे कहते हैं, कि कोई एक स्पेसिफिक नक्षत्र का मूवमेंट देखो. एंड देन दे फाउंड आउट कि जो नक्षत्रिक साल होता है, बॉचर होता है, ईयर, Hmm. साइडेरियल ईयर एंड द सोलर ईयर, उसमें एक दिन का डिफरेंस है. दे कैलकुलेटेड एवरीथिंग सो एक्सटेंसिवली, मतलब मैं बोलूंगा तो मतलब डिस्कस करूंगा, अभी मुझे गूज़बम्प आ रहा है कि दे कैलकुलेटेड विद सच अटमोस्ट प्रिसीशन कि इसलिए अभी तक जो हमारा जो तिथि का कैलकुलेशन होता है वो इतना एक्यूरेट क्यों होता है, क्योंकि ये उन लोगों का पुराना कैलकुलेशन है जो हम लोग अभी भी चलाते आ रहे हैं. जो पैरामीटर है वो थोड़ा बहुत 1000 सालों में ट्वीक करना पड़ता है, बट अदरवाइज दोज आर रियली वर्किंग मॉडल जिस पे अभी तक कैलेंडर बन रहा है भाई. मतलब यूएस में ऐसा हमारा पंजिका नहीं होता. ये पंजिका वाला जो सिस्टम है ये इंडिया में मिलता है, और तिथि के हिसाब से जो क्षण है, कब कौन सी पूजा चालू होगी, वो डिसाइड अभी भी लोकल पंडित करते हैं, है ना. एनीवे anyway, तो ये कंटिन्यूटी हमें दिखाना है कि एजुकेशन में कंटिन्यूटी रहा है, इवन दर्शन में जो है, फिलोसफी में कंटिन्यूटी रहा है, और वो किस तरह से इंडियन सोसाइटी में सीप इन किया है. कौन कौन सा इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल डिबेट हुआ है इन दर्शन शास्त्र, ये सब लोगों के सामने रखना है. हमें वेदांत या फिर अपना जो मान लो न्याय हो गया, है ना, सांख्य हो गया, ये सब हमें फिर से बाहर लाना है, इस पे चर्चा करना है, इस पे बुक्स लिखने हैं, ये सब तो जारी रखना है. एनीवे, लंबा हो रहा है, बट एनीवे, तो No. ये हो गया. फिर दो में मैंने रखा कि अच्छा, वर्किंग टुवर्ड्स द डिक्लेरेशन ऑफ नेपाल, श्रीलंका एंड म्यांमार एज सनातनी राष्ट्र. उनका नैरेटिव से थोड़ा सेकुलरिज्म, जो वेस्टर्न वे ऑफ सेकुलरिज्म, थोड़ा हटाने के लिए जियो पॉलिटिकली या फिर मतलब डिप्लोमेटिकली थोड़ा काम करना है. और फिर एक में मैंने रखा कांग्रेस मुक्त भारत. कांग्रेस इज अ बाबू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्राउन साहिब्स. इट इज अ सबवर्सिव ऑर्गेनाइजेशन, जो ग्लोबल जो भी सबवर्सिव
पावर है, उनके साथ कांग्रेस हिस्टोरिकली जुड़ा हुआ है. कांग्रेस वाज बिल्ड, मैन्युफैक्चर्ड, कॉन्सेप्चुअलाइज्ड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द ब्रिटिश. ठीक है. कांग्रेस का हिस्ट्री रहा है कि वो बस जिम्मीहुड अडॉप्ट करके इंडिया का पार्टीशन किया है. इट वाज कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग हु डिवाइडेड इंडिया, नॉट सम हिंदू ऑर्गेनाइजेशन. तो अगर हमें अपना पार्टीशन को अंडू करना है, तो पहला स्टेप ये होना चाहिए कि कांग्रेस को पहले खत्म करो, abolish, destroy, okay, this fake anti nationalist organization named कांग्रेस. तो ये हो गया. मैं और एक क्विकली और एक पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ. जो पॉलिटिकल हिंदुत्व ओवर रिलीजियस हिंदुत्व रखना है, उस पे भी मैंने एक आर्टिकल लिखा है. फाइनली मैं एक चीज प्रपोज कर रहा हूँ, जैसे हमारा जो, ये थोड़ा प्रोवोकेटिव है फाइनल जो पॉइंट है, बट आई कैन एक्सप्लेन. ठीक है. तो मैं बोल रहा हूँ कि रीथिंकिंग द कर्माश्रम स्ट्रक्चर फॉर एग्रेसिव हिंदुइज्म. कर्माश्रम जैसे होता है कि हमारा जो कर्म है कि एज के साथ साथ क्या क्या हम लोगों का ड्यूटी होता है, उसके हिसाब से आश्रम बनाया गया है. एटलीस्ट कॉन्सीव किया गया है ये आइडिया. पहले जैसे होता है कि ब्रह्मचर्य, जहाँ पे हम लोग पढ़ाई करते हैं पूरी गुरुकुल या अभी तो स्कूल में जाके. फिर गार्हस्थ्य होता है कि शादी करना है, प्रोक्रिएट करना है, जो परिवार के ऊपर मॉम डैड के साथ ऊपर, मतलब उनके लिए जो ड्यूटी है उसका पालन करना है. तो ये हो गया गार्हस्थ. वानप्रस्थ मतलब थोड़ा जब आप 40s या 50s में जाओगे, तो थोड़ा जब मान लो कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको थोड़ा बहुत अच्छे से एजुकेट करना है, संन्यास के लिए तैयारी करना है कि टू रीच द फाइनलिटी. फिर सोसाइटी में अपना इन्फ्लुएंस थोड़ा मतलब एक्सटेंड करना है ना. फिर संन्यास आता है जिसमें बेसिकली यू लीव द this all these structure of the society and you sort of start to isolate yourself to prepare for the nirvana, right? तो ये जो चार आश्रम है, मैं बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर एक हमें आश्रम कॉन्सेप्चुलाइज करना होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे आप देखो कि जैसे योगी आदित्यनाथ हो गया, नरेंद्र मोदी जैसे लोग हो गए. See, these are right now they are political personality and they have different facets. लोग इस पे चर्चा करते हैं. कंट्रोवर्सी भी होता है कि मोदी कितना अभी हिंदुत्ववादी रहा, या फिर ये सब थोड़ा साइड में रखते हैं. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ इधर योगी आदित्यनाथ, और योगी आदित्यनाथ के लेते हैं क्योंकि वो तो डायरेक्टली भगवा ही पहनते हैं. ठीक है. तो इनको छिल्लम जी भी जैसे कहा गया. कुछ आई थिंक एक यूपी इलेक्शन था, अखिलेश यादव ने बोला कि ये छिल्लम जी भी है 2022 के इलेक्शन के पहले. तो बेसिकली जब वो छिल्लम जी भी कह रहा है, वो योगी को जितना बदनाम कर रहा है उससे ज्यादा बदनाम कर रहा है अपने जो कपड़ा पहन, जो भगवा जो कलर पहना हुआ है जो योगी, उसको छिल्लम जी भी कह रहा है. ठीक है. तो अखिलेश यादव जैसे लोगों का अटैक सिर्फ एक पॉलिटिकल फिगर पे नहीं है, वो अटैक डायरेक्टली हिंदुइज्म पे है. तो बेसिस क्या है इसका? इसका बेसिस बेसिस ये है कि it is not the first time that Hindu spirituality and Hindu sannyasis have been mocked for their worldly endeavors. Ramdev was mocked before for becoming an entrepreneur. Sadhguru was mocked because of his inner engineering courses were not free of cost. The list is long, but what is the logic that instigates people to ridicule sannyasis who take initiatives, no matter how beneficial these initiatives are to the society? An analysis of this question will take us to a fifth ashram of modern Hindu life named Sanjay. संजय आश्रम में एक कॉन्सेप्चुलाइज कर रहा हूँ. मेरा पॉइंट ये है कि जो भी सन्यासी कोई एंटरप्रेन्योरल स्किल दिखा रहे हैं, या फिर पॉलिटिक्स को गाइड कर रहे हैं, या फिर कोई नए दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मॉक किया जा रहा है. किस लिए मॉक किया जा रहा है? उनका जो मॉक कर उनका पॉइंट क्या है कि भाई तुम तो सन्यासी हो, तुम तो सन्यास ले चुके हो, तुम ये सांसारिक कामों में जो पॉलिटिक्स हो गया, जो एजुकेशन हो गया, कोई कंपनी चलाना हो गया, इसमें रामदेव हो जाए या फिर सदगुरु हो जाए, ये लोग अपने आप को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं, या फिर ये पैसे लेके ये सब काम क्यों कर रहे हैं, कि इनर इंजीनियरिंग कोर्स के लिए पैसे क्यों ले रहे हैं? ये जो क्वेश्चन है ये एक पैराडॉक्सिकल है. पैराडॉक्सिकल इसलिए है क्योंकि हिंदू सन्यासी के ऊपर आप, मतलब हिंदुओं को ही एक्सपेक्टेशन होता है कि भाई वो निर्मोह हो जाएंगे, और ये जो सांसारिक जो मोह है इसके ऊपर चले जाएंगे, एंड ही और शी विल डाई इन अ केव.
आइसोलेटेड एंड ऑल दीज थिंग्स, ये एक दिमाग में हमारा बैठाया गया है ना. बट ऐसा अ, इससे हमें निकलना होगा. क्यों? बिकॉज कॉन्क्वेस्ट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ संन्यास. A true guru will always want to win the heart and free the soul of all beings, steering them towards the path of moksha. Conversely, the greatest kind of conquests are those where the conquerors don't have any attachment to the conquest, because the sense of attachment invariably leads to plundering of the vanquished. ठीक है. तो the conquest should not have this sense of attachment. Conquest should not have any sense of this sort of braggadocio, because it will create again atrocity and instability in a society. So the idea of physically conquering and subjugating the world originated arguably in ancient Europe, और फिर धीरे धीरे ये कॉन्क्वेस्ट वाला जो आइडिया फैलता गया. बट इंडिया फंडामेंटली बिलीव इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्क्वेस्ट, राइट, विच इज स्पिरिचुअल एसिमिलेटिव कॉन्क्वेस्ट, जहाँ बोला जाता है कि जो युद्ध है वो राजा के बीच है, नागरिकों के बीच. द वॉर इज नॉट बिटवीन सिटीजन्स, दे आर बिटवीन किंग्स. एंड ये अर्थशास्त्र में लिखा गया है. वी आर नॉट क्रिएटिंग इट आउट ऑफ थिन एयर. पार्ट ऑफ मनुस्मृति, मनुस्मृति में एक्चुअली ये सब चीजें डिस्कस किया गया है, जो कंट्रोवर्शियल बुक है, सो कॉल्ड. बट मैं प्रपोज कर रहा हूँ कि जो सन्यासी, हमें एक फिफ्थ संन्याश्रम इंक्लूड करना है सन्यास के बाद. कि ये हो सकता है कोई सन्यासी has gone to, let's say, Himalaya or somewhere else, contemplated for a while, meditated and got some spiritual attainment, and after that sannyasi has the right to come back to society to give back the knowledge. तो इससे क्या होगा, अगर संजय आश्रम एक फिफ्थ आश्रम हम लोग कॉन्सीव कर पाए, तो हम लोग जो सन्यासी हैं उनको देयर विल बी स्ट्रक्चर टू ब्रिंग देम बैक, so that they can sort of share their understanding of spirituality, of politics, of everything with the larger mass. And this way we can make the Hinduism inherently more aggressive and more missionary, है ना. अगर वो लोग गुफा में रह के वहीं जान दे देंगे तो हमारा सोसाइटी का फायदा नहीं है ना, हमारा जो धर्म है उसको स्प्रेड करने में फायदा नहीं हो रहा है. सो वी नीड टू हैव अ मैकेनिज्म, मे बी थ्रू टेम्पल्स. ये टेम्पल में अपना एक कोना रखो जहाँ चीजें पढ़ाया जाएगा, वहाँ सन्यासी आके, साधु आके पढ़ाएंगे, बुक लिखेंगे, जो पहले होता था. और ये फिफ्थ आश्रम अडॉप्ट करेंगे कि मैं संन्यास लिया था, अभी मैं सॉर्ट ऑफ, मैं एक संजय हूँ, मतलब मैं जीतने आया हूँ. क्या जीतने आया हूँ? आई एम हियर फॉर द स्पिरिचुअल कॉन्क्वेस्ट. मैं वट एवर आई बिलीव्ड इन, whatever knowledge I have received, I am going to propagate into the larger part of the society. तो इसलिए मैं एक फिफ्थ आश्रम सॉर्ट ऑफ हाइपोथेसाइज कर रहा हूँ, प्रपोज कर रहा हूँ, टू प्रोमोट एग्रेसिव हिंदुइज्म. तो ये मेरा शॉर्ट वर्ड, आई डोंट नो, आई टुक 15-20 मिनट्स. ये No स्टेप issue. बाय स्टेप प्रोसेस मैंने कौन मतलब प्रपोज किया है. I think it's a very novel idea that you have put forward. So, from your idea of having Sanjay as a fifth ashram, where one thing which I wanted to actually discuss with you. Okay. So, Mr. AIM, Ajay Mitra, has actually categorically said that there is a lack of confidence, there is a lack of self belief in Hindus primarily. Okay. So, because of that specific aspect of our personality, which is overall a psychological aspect of being having confronted a lot of invasions over millennia or so, so that will have a impact in terms of psychology, and that has pervaded into the Hindu society as a collective psychology, where we are not able to actually see something. We are always defending something rather than doing something more about it. So we always talk about defend. Okay. Now, how do we transform this psychological mindset from defend to actually know? So I'll give an example. So we had Vedas, then we had Upanishads. So Upanishads are the summary or the expression of Vedic knowledge. Correct. So we have been transforming, writing, rewriting our Smriti. Okay, our Smriti texts have been rewritten over time.
Now, maybe 1,000 or 1,500 years ago, we stopped actually evolving our knowledge systems, and they become static over a period of time. So now, how do we make sure that if one temple is destroyed, why do not we have the courage, the capability, and the capacity that I will build a grander or bigger temple which was destroyed on its place? Now we are talking about how to reclaim it. Where is the mindset of, okay, if one was destroyed, I will build 10 more temples? Where is the why is missing? Do you think? Huh, if you want a one line answer, Hmm. I do have that as well. It is Yeah. attack the judiciary. Hmm. Uh, that's, uh, I mean, it may sound controversial, but I don't see a difference between the Gumbat of Babri and the Gumbat of Supreme Court. Hmm. I'm not going to go any further, but Hmm. both the Gumbats are anti-civilizational. And I mean, there was a Bastille, right, in Hmm. France, which used to be very atrocious and anti-civilizational for the French people. Hmm. And they what they did, they destroyed Bastille. We destroyed Babri. And I'm so you know where the argument is going. Uh, and I do think we have to this मिलॉर्ड्स वाला जो जुडिशियरी है जो एंटी सिविलाइजेशनल है जो हिंदुओं पे को नफरत करता है हिंदुइज्म के कस्टम पे ओपनली बदनामी करते हैं ब्लास्फेमी करते हैं हिंदुओं को छोटा दिखाते हैं ये बदलना पड़ेगा so you know what happened in Pakistan for I'm giving you a one very radical example. uh, there was a blasphemy case, I forgot the name. तो वहां पे पाकिस्तान की जुडिशियरी ने क्या एक जज था उन्होंने एक बंदा ब्लास्फेमी किया था उसको शायद छोड़ दिया था या कुछ किया था तो जज के आसपास आई थिंक उसका कोई गार्ड रहा होगा उसने गोली मार दिया पाकिस्तान में उसके बाद से जितना भी ब्लास्फेमी केस आता है जज कुछ ज्यादा कुछ बोलता नहीं है so one big impediment towards achieving what we want to achieve is judiciary uh, and judiciary is see the point is बाकी जो लोग हैं they are um, I'm they are sort of elected people right Modi Narendra Modi is an elected prime minister but ये जो judiciary है fundamentally they are selected people they are nepotistic selected babu people right जो जिनका कोई एज सच पॉपुलर बेस नहीं है मोदी अगर जाएगा मोदी के पीछे 1 लाख बंदा आएगा ये लोग अपने आप को ढक के रखते हैं गार्ड वार्ड लेके हैं बड़े बड़े गाड़ी में घूमते रहते हैं दे आर सो डिसोशिएटेड एंड डिस्कनेक्टेड फ्रॉम इंडियन सोसाइटी they don't know an iota of the Indian societal values and they are giving judgment they are giving opinion in the guise of judgment I would rather say um, but okay I put a small declaration here Hmm. which I don't know how you may take it. I am not Hmm. Hmm. promoting any sort of violence, but Yeah, yeah, yeah. So yeah. correct. So we are not promoting any violence at all. So on that context, okay. So we have seen over the years, or like over the decades, okay, where if there is a Yakub Memon case comes in, and the highest paid lawyer comes at midnight and files a bail application. Okay. Now that represents a kind of a institutional capture which has taken which has taken place over decades in time. What do you think? And I will add two more things here: the political capital and social capital, which the Abrahamic faith systems have developed, the mechanisms have been developed, whether it's Abrahamic faiths of uh, any kind we see. So now there is a mechanism. Okay, there are systems where you take care of the faithful. Okay, in whatever way possible. Okay, we lack that system, the mechanism, and the support structure. So, what do you think? Did we had that mechanism anyway in the past, and how we lost it, and how we can regain it No, in I case? don't believe we have lost it.
Okay. बट आई डू बिलीव कि ये जो गुरु हैं, आजकल के जो गुरु जो कहते हैं, उनका पॉलिटिकल नेक्सस है. And gurus need to be confident enough to get out of the and even get beyond the political nexus. अगर महाकुंभ हो रहा है, अगर जुम्मे का खुतबा होता है हर फ्राइडे को, महाकुंभ में 40 करोड़ लोग आएंगे. एक स्टेज क्रिएट करो और वहां से प्रोपागेट करो कि सुप्रीम कोर्ट में ये चल रहा है. सुप्रीम कोर्ट की इस जज ने इस हिंदू कस्टम को गाली दिया है. ये जो तमिलनाडु में ये मिनिस्टर ने कहा है इरेडिकेट सनातन धर्म. बोलो 40 करोड़ लोगों के सामने. See, the point is Hindu gurus have become meek and submissive and at time very coward. हिंदू गुरु को इतना कावड़ नहीं होना चाहिए. ये जो हमारा हिंदू राष्ट्र जो भी है, वो हिंदू अभी स्वराज से आया है ना. हिंदू अभी स्वराज समर्थ रामदास ने दिए थे, जो शिवाजी संभाजी के गुरु थे. और ये नॉलेज उन्हें मिला था एक सिख गुरु, आई थिंक गुरु हरगोविंद या उनसे मिला था कश्मीर में जाके, ये कहा जाता है. सो ये और मतलब हरगोविंद को पूछा जाता है भाई तुम गुरु हो तो तुम हंटिंग भी क्यों जाते हो. एंड सिख गुरु ने जवाब दिया था, वो जो मीरी पीरी जो परंपरा है कि वी हैव अ sword for the god and a sword to rule the rule the earthly objects and subjects and nations. ये ये हिंदू गुरु के दिमाग में रहना चाहिए कि 40-50 करोड़ लोग अगर आ रहा है तो मैं वहां पे तकरीर दूंगा. तकरीर एज इन वहां पे मैं आई विल वी विल डिलीवर आवर ओन स्पीचेस, आवर Sermon. ओपिनियन, सरमन देंगे वहां पे. और ये तो आसान है. मतलब हिंदू कोई भी फेस्टिवल होता है, गणपति पूजा हो जाए, दुर्गा पूजा हो जाए, ये पॉलिटिकल पार्टी अपने आप सुधर जाएंगे. एक दो गुरु का अरेस्ट होगा, बाकी गुरु खड़े हो जाए, है ना. Yes. So I'll come to that specific point that you have mentioned. So, because of the mechanism that is being developed over the centuries, okay. So the Abrahamic religions have a political, social, and financial capital, which is being deployed to further their cause, and which is also deployed to actually weaken the pagan soul as such. Now, how do we see? As we already know, correct? So that our smritis, okay, are can be changed. As you are going to add one more ashram, correct? Sanjay ashram. So, Sanatan Dharma is an evolving faith over time, which adapts to situations the way it sees itself. Okay, and it creates mechanisms to actually survive and thrive. Okay, even in a worse kind of situation. Now, that ability is being lost for many centuries, or they have been in couple of time periods. Like you had Marathas, then you had Vijayanagar. Primarily, I remember two of them. There are many more would be there. So you had Marathas and the Vijayanagar Empire, which were actually able to actually re-establish the mechanism which was there, which enabled the Sanatana Dharma to thrive. Now that is being lost. Okay, how as a common citizen we would be able to actually contribute in that phase where we were able to actually say only one thing or two things or three things which we need to do as common citizens so that that cultural capital, the social capital, and also the financial capital gets re-established over a period of time. राइट. तो इसका अलग 3-4 एस्पेक्ट तो है. Hmm. एक एस्पेक्ट लेट्स पुट इट डायरेक्टली. जैसे मान Hmm. लीजिए इन बंगाल, राइट, Hmm. Hmm. अब दुर्गा पूजा होता है, Hmm. एंड हियर इन महाराष्ट्र गणपति का उपासना होता है, पूजा होता है, उत्सव होता है, गैदरिंग होता है. एंड देन व्हाट वी डू, वी बेसिकली क्रिएट अ मूर्ति आउट ऑफ मिट्टी, सॉइल, राइट, और उसका विसर्जन हो जाता है. नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि आपको अगर एक चौराहा जो है, एक चौराहे पे यू एजर्ट योर डोमिनेंस फॉर 2-3-4 days a week, मैक्सिमम a week, you assert your dominance. चौराहे पे मूर्ति बना के पूजा किया, उन्हें प्राण प्रतिष्ठा किया, फिर विसर्जन भी कर दिया. मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए. मेरे हिसाब से यू क्रिएट अ प्रतिमा ऑफ स्टोन
और जहाँ पे कर रहे हो 1 साल करो, दूसरे साल करो, 3 साल करने के बाद वहां पे मंदिर बनाओ। ठीक है। अगर प्राण प्रतिष्ठा हो गया, मंदिर बन गया, वो जो चौराया है, ओके, कैप्चर इट। लैंड अपना है, पेगन लैंड है, तो सरकार का सुन के तुम विसर्जन क्यों करते हो? नहीं करना है। जो अगर छोटा चौराहा है, छोटा मंदिर बनाओ। बड़ा जगह पे कर रहे हो तो वहां पे एक मंदिर बना दो, बट क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ परमानेंट स्ट्रक्चर। ओके, वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, नेता लोग तो उद्घाटन करने आते हैं, दे इनॉगरेट दिस उत्सव, सो यू ऑलरेडी हैव द पॉलिटिकल सॉर्ट ऑफ सपोर्ट ऑन योर साइड। एक बार करके देखो। जैसे एक चीज ममता ने अच्छी की थी, है ना, कि जो भी अच्छा स्कल्पचर होगा, ये होगा, उसे हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे। सो विसर्जन नहीं हो रहा है। ये जो विसर्जन वाला आइडिया है, इसको थोड़ा मॉडिफाई हमें करना पड़ेगा टू कैप्चर द, क्योंकि अब जो अब्राहमिक माइंडसेट है, उसमें बोलते हैं कि अल्लाह हो जाए या गॉड है, दैट इज द ओनली सोवरेन एंटिटी। मतलब जो लैंड है, ऑल लैंड बिलोंग टू अल्लाह। इसको चैलेंज एक ही तरह से कर सकते हैं, परमानेंट स्ट्रक्चर बना के। अगर राम मंदिर एक जगह बन गया हमारा अयोध्या में, तो वो लैंड कैप्चर करने के लिए उन्हें राम मंदिर तोड़ना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे टू सॉर्ट ऑफ रिकैप्चर, वट एवर यू कैन कॉल इट रिकैप्चर फ्रॉम द इस्लामिक परस्पेक्टिव, बट दिस इज नो अदर वे। टेररिज्म कर लेके, 2-4 लोगों को मार के, वो जमीन तो फिर से बाबरी का नहीं हो जाएगा ना, वाकफ का नहीं हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई अगर फेस्टिवल चल रहा है, यू ट्राई टू कैप्चर दैट प्लेस। एक चौराहे में, अगर आप केरल में जाओ, बड़े बड़े चौराहे में सब मदर मेरी और जीसस का बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बना के रखा है। अगर क्रिश्चियन लोग ये कर सकते हैं, हिंदू क्यों नहीं कर सकता? हिंदू सारे चौराहे पे नेहरू का क्यों मूर्ति, मतलब नेहरू का मूर्ति लग सकता है, श्री कृष्ण या रामचंद्र का मूर्ति क्यों नहीं लग सकता? You have to capture all those joints, the chorayas, and you have to establish temples in those chorayas to capture the imagination of a child, even of even a stray dog. You know, हमारे मंदिर में सारी चीजों का अलाउड है, गो से लेके, है ना, डॉग्स हो जाए, तो उन्हें भी थोड़ा आश्रय मिलेगा, और ओवरऑल ये अच्छी चीज है। ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि अपना जो, आप शायद हलाल इकोनॉमी का कुछ इक्विवेलेंट पे आप हिट करने की कोशिश कर रहे हो, कि सनातन या झटका इकोनॉमी ऐसी कुछ बनाना चाहिए कि नहीं। यस, आई डू बिलीव No, इट। no, no. I'm not into that. I'm just saying, correct. There is a correct 10% of money which is given by the जक़ात। yeah, yeah, zakat, and also, and I think uh, the church also has some kind of funds which is like every Christian would contribute something to the local church. Okay, राइट, so so correct. So there is a kind of a cohesive mechanism which makes sure that the faithful are taken care of whenever there is in trouble. Now, राइट, nor we have the social capital. So every week, faithful will come on Friday or Sunday and they will meet. That creates a social capital एग्जैक्टली, between communities, and the राइट, money contributed to the local church or to the local mosque creates a financial capital, which राइट। is again deployed to help people. Now, that is something which is correct. It doesn't need governments to do that. हाँ, People can do इसमें it on जैसे, their own. राइट, तो इसमें क्या हुआ था हिस्टोरिकली, जब आप देखोगे 1947 के बाद क्या हुआ। जो हिंदुओं की जमीन था, ठाकुरों की, मान लीजिए काउ बेल्ट में, उनका जमीन हड़प लिया गया, और उसको बर्गा, बंगाल साइड जैसे हुआ था, बर्गा कर लिया गया। जो भी जमींदार थे लोकल, छोटे मोटे, जो भी जमींदार बोल सकते हैं आप, छोटा मोटा लैंडलॉर्ड बोल सकते हैं, उनका जमीन बिन बताए कब्जा कर लिया गया। और वो शायद कोई आ रहा है, उसको रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, या सरकार ने कब्जा के अपने पास रख लिया। प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुआ, वो जो जमीन थे, वहां से जो फसल उगता था, वो कोई लोकल मंदिर में जाता था, वहां से लोगों का खान पान का बंदोबस्त होता था। ठाकुरों का जमीन जब कब्जा कर लिया, उसका ये नहीं कि वो जमीन के फिर सरकार कुछ खाना, मतलब क्रॉप वगैरह उगाने लगा, ऐसा तो हुआ नहीं। तो हिंदुओं का जो वो सोशल ओवरऑल कैपिटल वाला जो सिस्टम था,
वो इंस्टेंटली गायब हो गया। जबकि मुस्लिमों के लिए वक्फ बोर्ड नेहरू बना के गया कि यहाँ से जो मुस्लिम छोड़ के पाकिस्तान भी गए थे उनका जमीन वक्फ बोर्ड के पास जाएगा। तो और फिर क्या हुआ, क्योंकि ठाकुर लोगों से जब जमीन हड़प लिया गया उसके बाद ठाकुर लोगों को विलेनाइज किया गया कि ठाकुर मतलब वो टीका लगा के बंदूक लेके निकल जाता है। ठाकुर लोग किल पीपल। यू सी, यू वॉच मूवी लाइक कोयला, यू वॉच मूवीज ऑफ बच्चन, एंड एवरीवेयर ठाकुर आर विलेनाइज्ड, राइट। फिर धीरे धीरे मार्क्सिस्ट हिस्ट्री आया। फिर बोला जो तितुमीर का जो जिहाद था वो एक्चुअली जिहाद नहीं था, वो हिंदू मतलब क्योंकि बंगाल में बहुत सारे हिंदू जमींदार थे, उनके खिलाफ ये रिबेलियन था। सो आपका जमीन भी हड़प लिया, आपका सोशल कैपिटल भी डिमिनिश कर दिया, और आपके सोसाइटी के फैक्शन को विलनाइज कर दिया, हु यूज टू टेक केयर ऑफ द सोशल एंड ऑब्वियसली इकोनॉमिक कैपिटल। अब जैसे एक नया चीज इमर्ज हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ, लेट से अदानी हो जाए, अंबानी हो जाए, बट ये लोग कितना काम कर रहे हैं टुवर्ड्स आवर सोशल हिंदू कॉज, है ना। इनका इम्पैक्ट इतना ज्यादा है नहीं No, no. ना ये लोग Okay, okay. So, first of all, actually, they are not doing it. Okay. And second is why they are not doing it. Maybe two parts of the question. दे आर नॉट डूइंग इट, इट इज तो फैक्ट। मतलब हिंदुओं का लोकल अगर ठाकुर हो जाए उसके पास भी 3-4 मंदिर का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता था। आज भी आप देखो कि जो जयपुर का मान लीजिए जो राज परिवार है, उन्होंने सारा कुछ छोड़ दिया, फोर्ट वोर्ट छोड़ दिया, बट जो मंदिर है वो उनके अपने पास रखा है कि मंदिरों का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने राज परिवार का है। Now all these business minded people are not doing it, first of all because of the internal politics of India is very rifted, कि मंदिर बनाने लग जाएंगे तो फिर अपना डीएम के उसके पीछे पड़ जाएगा, या राहुल गांधी अदानी अंबानी के पीछे पड़ जाएगा। बोलेगा कि मंदिर बना रहा है तो दे आर प्रो बीजेपी, है ना। सेकेंडली आवर ये जो वैश्य जो कम्युनिटी बोल सकते हो, क्योंकि वो बिजनेस कर रहे हैं, दे आर नॉट ब्रेव एनफ नाउ इट इज, है ना, कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं मुझे अगर करना है तो मैं करूँगा, नो मैटर व्हाट। मुझे यूनिवर्सिटी क्रिएट करना तो मैं करूँगा, और वो हिंदू माइंडेड यूनिवर्सिटी होगा। मतलब फंडिंग अगर हमें चाहिए टू क्रिएट द हिंदू इकोसिस्टम, वो आएगा कहाँ से? वो वैश्य कम्युनिटी से आएगा, है ना। जमीन तो अब हिंदुओं के पास रहा नहीं, सरकारों का है, जो सेक्युलर स्टेट है, सरकार तो कुछ करेगा नहीं। तो हिंदू बिजनेस क्लास जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर नॉट वेल टॉट अबाउट द हिंदू वैल्यूज, ठीक है। वो सारे पढ़ने हार्वर्ड ही भेजते हैं, विच आर काइंड ऑफ जस्टिफाइड, मे बी, आई डोंट नो, मे बी समहाउ इट इज जस्टिफाइड, बट देन इन हार्वर्ड दे डोंट टीच यू अबाउट सनातन धर्म। तो वो लोग इनहेरेंटली फिर पैसा कमाते हैं, फिर डिरैशनेटेड ही हो जाते हैं, और इसका असर ओवरऑल हमारे हिंदू इकोसिस्टम में पड़ रहा है। मे बी दे एंड वेरी एविडेंटली इंडिया का जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है वो बीजेपी हो जाए या फिर कोई दूसरा हो जाए, they are not interacting these messages, they are not interacting with the वैश्य community and passing on this message कि भाई तुम्हें हिंदू इकोसिस्टम के लिए काम करना है। वी डोंट सी, मतलब छोटा मोटा दिख जाता है कि अनंत अंबानी ने 2-3 छोटे मोटे मंदिर खोल दिए, या फिर कहीं से कुछ जू के लिए कहीं से कोई जानवर ले आए। अदर देन दैट वी डोंट सी एनी लार्ज स्केल यूनिवर्सिटी बीइंग बिल्ट अप, वी डोंट सी इन्हीं महंत, और अपना कांचीपुरम हो जाए या फिर अपना जो शंकराचार्य मठ, उनके जो मठ्स हैं, दे आर गेटिंग लार्ज स्केल फंडिंग, वी डोंट सी एनी ऑफ दीज थिंग्स हैपनिंग। तो ऑब्वियसली इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें लेना होगा। Okay, understood. So, my final question to you, okay, final question to you before we take some comments from the audience, that would be, okay. So, can so we have seen a kind of a systematic creation of political, social, and financial capital by the Abrahamics. Okay. Can we or should we replicate their methods and processes to create our or re-establish our own social, political, and financial capital? हाँ, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। कैन यू इमिटेट?
which part we can imitate and which part we should not, right? तो इसमें एक बड़ा पॉइंट ये होता है कि यू हैव टू गो टू वेरी फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ हिंदुइज्म और सनातन धर्मा और एनी पेगनिज्म एंड आस्क कि ये जो भक्ति है इसका मतलब फंडामेंटली कहाँ से डिराइव हुआ है। ये फंडामेंटली नेचर से डिराइव हुआ है, प्रकृति से डिराइव हुआ है। और वो प्रकृति बाहर भी है ना, द आउटसाइड आउटसाइड प्रकृति, द आउटसाइड नेचर एज वेल एज द इनहेरेंट नेचर ऑफ अ ह्यूमन माइंड, राइट? तो हिंदू धर्म हो जाए या सनातन धर्म का जो मंदिर है वो प्रकृति है। वन गुड एस्पेक्ट दैट यू कैन सी इन आवर जनरेशन कि अभी थोड़ा जैसे लोगों के पास हमारे अपने जो यूथ के पास पैसा आना चालू हुआ, दे हैव स्टार्टेड टू रोम अराउंड दिस कंट्री, यू नो, टूरिज्म पे काफी बढ़ोतरी आया है। इट शोज यू समथिंग समथिंग वेरी फंडामेंटल। वो फंडामेंटल एस्पेक्ट ये है कि अब लोग इंडिया घूमने लगे हैं, इंडिया को जानने लगे हैं। और इंडिया को जानना मतलब इंडिया का जो कल्चर है, जो ऑब्वियसली यू कैन कॉल इट पेगन डोमिनेटेड सनातन जो कल्चर है, इसको जानना होता है। एंड वो हमारे जनरेशन में हो रहा है। दे आर प्रोबेबली नॉट डूइंग इट एक्टिवली थिंकिंग कि मैं कुछ धार्मिक काम कर रहा हूँ, बट ये एक्चुअली व्हाट दे आर डूइंग इज सम सॉर्ट ऑफ ए पिलग्रिमेज, राइट? और ये जो एस्पेक्ट है, ये अब्राहमिक जो स्ट्रक्चर है इससे बहुत डिफरेंट। दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन अब्राहमिक स्ट्रक्चर क्या होगा, शहर के एक चौराहे पे एक बड़ा सा चर्च रख देगा। हाँ, एयरपोर्ट से जब निकलोगे वहां पे एक बड़ा सा कोई तमिलनाडु के कोई चेन्नई वेन्नई में बड़ा सा चर्च कर देगा, जीसस इज द गॉड लिख देगा, क्योंकि उन्हें ये प्रोपेगेंडा चलाना होता है कॉन्स्टेंटली। हिंदुइज्म ऐसा नहीं है। हिंदुइज्म का या फिर जो सनातन धर्म के काफी बड़े मंदिर है जो शहर से बहुत दूर है, जहाँ लेना देना नहीं है, जहाँ आपको कोई पहाड़ चढ़ के पहुंचना होगा। और लोग ये सब एक्सप्लोर करने लगे हैं। जो लोकल चीजें कहावत है अबाउट अ टेम्पल, ये स्टोरी लोग जानने लगे हैं, ये पब्लिकेशन में आ रहा है। एंड दिस इज अ गुड एस्पेक्ट, दिस इज अ गुड साइन कि हमारा जो एटलीस्ट वी आर मे बी अनोइंगली वी आर सॉर्ट ऑफ कन्वर्जिंग टू दिस पॉइंट वेयर हम लोग अपने आप को, विच ऑल्सो मीन कि हम लोग जो हिंदू दर्शन है उस पे इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है। नाउ इसको फिर इसको कोट अनकोट वेपनाइज कैसे कर सकते हैं, राइट? इसको वेपनाइज करने का तरीका वही आपरामिक तरीका ही है। तरीका ये है कि यू हैव टू राइट मोर स्क्रिप्चर। आप सोचो कि मतलब इंडिया में हिंदू शास्त्रों पे 500-600 सालों से काम ही नहीं हुआ है। मतलब ठीक है, 100 साल पहले विवेकानंद आए थे, फिर रमन महर्षि आए, फिर अलग अलग लोग आए जिन्होंने थोड़ा बहुत करके गया है। बट ऐसा नहीं है कि फॉर ए डिसेंट्रलाइज्ड रिलीजन लाइक हिंदुइज्म देयर हैज टू बी, मतलब कॉन्स्टेंटली हमारे पास ऐसे 12-15 तो लोग रहना ही चाहिए जो मतलब एक ग्लोबल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। So, and the way to do it is through sort of analyzing our scriptures and to sort of write more on this. अभी तो बुक्स धीरे धीरे आने लगा है, बट ये अपने गुरुओं को नए नए गुरु गुरु क्रिएट करने होंगे, नए नए PhDs क्रिएट करने होंगे, who will have good knowledge of our existing scripture and who will give a way to look forward. कि जैसे AIM का क्वेश्चन होगा कि 100 सालों में हिंदुइज्म के क्या होगा, ये इसका आंसर हम लोगों से ही निकलेगा। अगर हमसे नहीं निकलेगा तो ही फिर वो वी आर डूम टू पेरिश। इसका AIM का इस क्वेश्चन का जवाब हम लोग अगर दे पाते हैं कि ये होगा 100 सालों में और हम लोग करके दिखाएंगे, then AIM will the analysis will of AIM and the forecast will fail and it will be a happy failure for AIM as well, right? तो इसके लिए तो वही अब्राहमिक तरीका है। टेम्पल अपना रिक्लेम करो, ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेचर पब्लिश करो, अपना इकोसिस्टम बनाओ, वो साइंस में हो। अच्छा, जैसे साइंस में है कि आप इंडिया से अगर पब्लिश करते हो साइंटिफिक आर्टिकल, यू ट्राई टू पब्लिश अमेरिकन जर्नल में, वहाँ दिक्कत आता है व्हेन यू गिव इंडियन एफिलिएशन।
ये मेरे साथ हुआ है, मतलब यूएस का एफिलिएशन देता हूँ तो वो फटाफट पब्लिश हो जाएगा 2-3 महीने के अंदर। इंडिया का एफिलिएशन दे दो, अपना एड्रेस इंडिया का लिख दो, वो लोग फालतू क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं। तो ऑब्वियसली हमें तो सेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम क्रिएट करना है, यूनिवर्सिटीज क्रिएट करना है, टेम्पल रिक्लेम करना है, जर्नल क्रिएट करना है, टूरिज्म को बढ़ावा देना है, लोकल टेम्पल को जगाना है। देयर हैज टू बी अ mechanism जहाँ पे अपर क्लास सोसाइटी कैन contribute towards the upliftment of the lower class, so-called lower class society, and not necessarily through the government aid, but through our public funding, पब्लिक सनातनी फंडिंग। तो ये तो हो ही सकता है। और मैं आई थिंक आप अगर अलाउ करते हो, आई कैन टू sort of address AIM's Yes, sort yes, of please go ahead. Please apprehension. go ahead. I would Please like go ahead. to read the final section, final chapter Hmm. of my book, A Hmm. Short Letter to All the Hindus. Okay, Right? before you read it, I'll go and grab a glass of water. And before Sure, sure. that, also, I would just again tell the audience that please go ahead and at least go and grab a copy of this. A lot of issues which ails Hindu society needs can be addressed if we first understand the problem. Okay. So in this book, Dr. Bijeet has already given the issues, documented the issues, and also given some aspect of solutions which can be found. So I would request people go ahead. This is something the money will be worth buying. I have two of these books. I read simultaneously all of these sometimes whenever there is a issue where I need some data. So it's a very good data bank as well for people who want to understand what happened, when the temple was broken, how it was broken, how many people were died. So all these are there. So yeah, so go ahead, Dr. Bijit. So I will be back in 2 minutes. Grab a glass of water, and then you can read the Sure. passage. Sure. Should I start reading now? Yes, go ahead. Go ahead. अच्छा चलो मैं पढ़ता हूँ, फिर यू Yes, ब्रिंग योर, है ना? I'll back in 2 minutes just to grab a glass of water. हाँ, 2 मिनट तक तो ये चलता Hmm. रहेगा। Thank you. इट्स अ टू पेज लॉन्ग लेटर टू ऑल हिंदूज। Go ahead. Go ahead. No issue. Sure. So a short letter to all Hindus. Dear Hindus, the shackles that you think are holding you back and are making you meek and submissive, they do not exist anymore. The whole world is looking at you in awe of your rise as a solid flanks in recent years. You are a race that has discovered language from the ocean of meandering primitive emotions. A race that has taught the world how to count. A culture that has gifted humanity with the choicest verses flowered with exquisite metaphors. A culture that has surpassed all limits when it comes to the penning down of hymns that lead a man to the realization of the divinity within and without, of carving every inch of giant monoliths with the finest of craftsmanship that remain for generations after generations, or creating philosophy that dives into the deepest trenches of mind and flies beyond every conceivable barrier that empirical physicality imposes on human imagination to prize out the sweetest nectar of immortality. Now is the time where you are standing at the crossroads. One road leads to the complete extinction of you, your God, your belief, and everything that is Hindu. The other road leads to your immortality and the complete conquest of the world. The road from thousand years of darkness to eternal light, from all mortal fears to immortality. The road that unites you with your God, that leads from Atman to the eternal Brahman, and makes you realize that you and your God are one and the same. You and your God are the same. Your God is as strong as your sense of oneness. Your God is as weak as your ignominious divisiveness. And your God has the same aspiration as you have. Your God has the same destiny as yours. And your God and you have the same set of enemies. It is you who has created your God. You have been gifted the same holy land that your God was once gifted. It is only you who has been protecting your God in the face of 1,000 years of generational hurdles and vice versa. Your God is
as brave and as mighty as you are, and your God is as vulnerable as your cowardice. You and your God represent the same idea. Your God is the essence of the representation that is you. If you flourish, your God will bloom in the world with a thousand pretty petals. But if you stoop to the level of choosing subjugation and zimmihood, your God will also be trampled 5 times a day, scattered on the stairs of every Ashrafi mosque. Your God is revered as much as you choose to respect and stand up for yourself. So rise up, Hindus. Don't be meek and submissive. Don't allow others to trample over your dignity and your God and your aspirations anymore. Your civilization has been wounded enough, but never again. Conquer the world and reclaim the unquestionable superiority that you deserve as the cradle of all civilizations, as the source of all languages, as the mother of all cultures, and as the river of all forms of knowledge that have ever been conceived by human ingenuity. Re enlighten the world with your history, your legacy, your epics, your belief, your sciences, your Upanishads, an inspiring journey from the dust of death to divine immortality. And may you always rise and never fall from grace again. You are too precious an idea to fall into oblivion. Be united. Let all Hindus be one spirit. Have the ambition to bring whole humanity into one eternal Hindu consciousness you once conceived in the Vedanta. Conquer the entire world with your treasure of cultural and spiritual awakening. Sarve Sanatane Bhavantu. Ekatmam, Ekatmam, Ekatmam. Thank you. Thank you. That was, I think, the highlight of this stream, where the message is given to every Hindu. So, and I think people have heard it loud and clear to everybody what they need to do and how they should do. So now we will take a few questions which Sure, came. sure. Yeah. So let me just here. So we have this question, okay, from Retrowave. Why are Hindu leaders always silent on everything atrocities against Hindus, and why they rarely take part in politics in India? I think Hindu By leaders, Hindu he leaders, means do you mean the political leaders or the no, no, gurus? no, 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 no. I think he's talking about the dharmic leadership, the priest class, matas like same. Right, right. Because first of all, the legacy is like in the during the Islamic period, Hindu gurus did not have any voice at all. So maybe now they are thinking ki it is in the tradition of Hindu culture to remain silent, and only go to a cave or a secluded place and just do dhyana. So this sort of misconception about Hindu Dharma, this is one reason. Because we did not have a voice in the medieval era, this is being misinterpreted as the Hindu tradition. Um, Secondly, because the Abrahamic um, ideologies do have a idea of blasphemy, and in the Islamic case, they take it to the extreme of uh, killing people. So Hindu gurus are sort of, maybe they are afraid of this thing. Thirdly, because it is only the Hindu religion and no other, call it religion, dharma. Only Hindu dharma has some sense of spirituality. So whenever any, let's say, any Abrahamic man or woman, they want to um, approach spirituality, the only path right now that exists in the world is Sanatan Dharma. So they approach our Sanatan gurus, Hindu gurus. But Hindu gurus think that they should not convert, they should not engage in garvapsi or all those kind of things. They just have to teach the spiritual aspect of life. And because a large segment of Abrahamic people are sort of engaged and associated with Hindu gurus think it will be a little offensive to question the Abrahamic practices, because they will create political controversy.
and our Hindu gurus are also learning secularism, which is a new thing. So they think ki, the church and the state, church mean the guru and Narendra Modi, their work should remain matlab completely segregated, separated. So Hindu guru thinks ki they should not talk about Indian politics or the politics of jihad or missionaries at all. Yeah. Yes. So we have one more question. That is something. I'll take this as comment first. This is actually an interesting comment. So, uh, a Hindu temple near me only publishes its website in Hindi and Nepali. There are English speakers interested, but they assume they are not welcome. And it's hard for them to get information. I think he lives outside India, most probably. I am assuming. So, is there a kind of like a exclusionary practices which has stepped in where uh, maybe due to their Abrahamic faith they are not welcome and we don't preach enough. No, so the point is, so I have one more opinion, which is to say ki, if we manage to translate Ramayana and Mahabharata in English with the kind of verses that we have in Indian languages, जिस हिसाब से इंडियन लैंग्वेजेस में रामायण लिखा गया, महाभारत लिखा गया है, उस तरह से अगर एक बंदा आया जो उस तरह से इंग्लिश में रामायण महाभारत लिख पाएगा, मतलब इंग्लिश और संस्कृत को मिक्स करके, जैसे कृतिवासी रामायण है, बंगाली में कृतिवासी रामायण हम लोग पढ़ते, हमेशा पढ़ते हैं, उसमें लोकल बंगाली, मतलब फिर साधु बंगाली, मतलब जो लिखित अच्छा सो कॉल्ड अर्बन बंगाली और संस्कृत को इस तरह पंच किया गया है कि वो पढ़ने में मतलब एवरीवन कैन कनेक्ट, ओके, एंड विदाउट द लॉस ऑफ मीनिंग, क्योंकि संस्कृत में जैसे रामायण लिखा गया था, तो संस्कृत से कृतिवासी जो रामायण है थोड़ा कुछ कुछ जगह अलग है, बट ओवरऑल द मीनिंग एंड द एसेंस रिमेन्स इंटैक्ट। इस तरह से अगर अंग्रेजी में लिखा हम लोग लिख पाते हैं गीता को या फिर रामायण महाभारत को स्पेसिफिकली, देन वी विल मैनेज टू कन्वर्ट होल ऑफ यूरोप, ये मेरा बिलीफ है, okay, which also mean ki English don't have that much vocabulary to capture the essence of these Indic literature. So अगर हाँ मतलब हमें कोशिश करना चाहिए, और ये यहाँ पे जो कमेंट आया है इसके लिए तो फंडिंग चाहिए, विल डू दैट राइट, हम लोग कर सकते हैं, बट ऐसे छोटे मोटे कितने काम करेंगे हम लोग, मतलब इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ये तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होगा, फंडिंग के साथ होगा, प्रेफरेबली फ्रॉम द गवर्नमेंट, बट वी वुड लाइक टू नो स्पेसिफिक डिटेल्स अबाउट Yes. दिस थिंग। Yeah, so actually I have given the email address in the chat, so you can send your suggestions and other comments if you have over email if it's long, or you can also share your opinions on the comment section as well. But if it's something which is राइट, more detailed, do send us an email. We do read email and we will reply to you, and we'll try श्योर, to do something about it or get the message to somebody people who might be able to help in that way. Okay, we have this little bit out of the question. So uh, I'll not read the full question. I think let it be there. So my question is there a decline in the Hindu society, in the psyche of Hindus as such, where I have seen in Tamil Nadu itself that temple priests are actually doing more harm to the temple and the local Hindus as a whole rather than people from outside. So is there a राइट, decline in the morality of Hindus as a whole? Morality. राइट, 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 दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब भगवान Hmm. से जाके मांगो वाला जो फंडा है, Hmm. 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 एंड ओवरऑल जो कि द क्वेश्चन इज वेदर लाइक हाउ मोरालिटी शुड इमर्ज फ्रॉम टेम्पल इन द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट, और ये बेसिकली मेरा सेकेंड बुक का थीसिस टॉपिक है, Hmm. but I can give you a glimpse of my line of thought. Um, so again, we have to discuss this. मतलब it's not like जैसे for in the context of Abrahamics, their morality emerges from the God itself.
हिमसेल्फ, नॉट इवन इटसेल्फ। ठीक है, तो एक गॉड है, वो जो बोलेगा वहां से मोरालिटी निकलेगा, मतलब वो एक बुक भेजेगा, बुक के थ्रू पूरा मोरल डोमेन एंड कॉन्टेक्स्ट Literature, डिफाइन होगा। literature. स्क्रिप्चरल मोरालिटी जो Hmm. है, Hmm. इट्स अ स्क्रिप्चरल एक्सटर्नल मोरालिटी, scriptural external morality, and these are sort of prescriptive morality, matlab you better obey by what the god is saying, else you will go to hell. बट हिंदुओं में क्या है, हिंदुओं में जैसे जो देवता है, जो विग्रह है, दे मतलब दे शुड ऑल्सो ओबे द सनातन मोरालिटी, द इटर्नल मोरालिटी। जो धर्म है वो भगवान को भी मानना पड़ता है। सो दीज वैल्यूज आर इवन मोर फंडामेंटल देन द डिविनिटी इटसेल्फ। ओके, मतलब राम हो या कृष्ण हो या इंद्र हो या शिव जी हो या ब्रह्मा हो, अगर इन्होंने धर्म नहीं माना तो इन पे भी श्राप आता है, राइट? तो एंड दैट्स अ वेरी फंडामेंटल डिफरेंस। यहाँ पे जो सनातन जो आइडिया है, धर्म है, वहां से इम्बॉडीमेंट ऑफ गॉड, आइडिया ऑफ गॉड निकलता है। अब्राहमिज्म में गॉड से वैल्यू निकलता है। ठीक है, नाउ हाउ टू कैप्चर दिस वैल्यूज, जो हम लोग बोल रहे हैं कि ठीक है एक इटर्नल वैल्यू है, उसको कैप्चर कैसे कर सकते हैं? वन वे इज कि बिकॉज दे आर इटर्नल, दे हैव टू बी लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है, अगर आप फॉल्सहुड अडॉप्ट करते हो, इट विल लीड टू इंस्टेबिलिटी। उसके लिए पूरा मतलब ऑल द ट्रूथ्स आर बेसिकली कनेक्टेड बाय सिमेट्री, राइट, बाय पैरिटी एंड कंसिस्टेंसी। सो ये जो पूरे जो सत्य होता है, ये एक, अगर सत्य का अलग अलग ब्रांच है, दे आर कनेक्टेड एंड हैव अ सिंगल रूट, विच इज प्रोबेबली द रिथ, राइट, वन इटर्नल यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, जैसे ये एक एस्पेक्ट हो गया। बाकी दूसरा एस्पेक्ट हो सकता है ऑनर, राइट। और ये हर एक पेगन कल्चर में ये एक एसेंशियल क्वालिटी है कि यू हैव टू हैव द ऑनर। मतलब जैसे अब्राहमिज्म में तुम्हें भगवान के सामने झुकना पड़ता है, तुम्हें स्लेव बनना पड़ता है, एंड like doctrine like Christianity, they go to the extent where in order to stoop down a man to the level of a lamb and a sheep, they nail their God on the cross. मतलब लोगों को भेड़ बनाने के लिए भगवान को टंगा दिया, राइट? ये जो स्लेवरी है अब्राहमिक डॉक्ट्रिन का, ये पेगन मोरालिटी में एब्सेंट है। पेगन मोरालिटी में यू कैनॉट बी अ स्लेव टू गॉड एंड देन लाइक से कि भगवान मुझे दे दो। नो, यू इन पेगन मोरालिटी you look at your god, you pay respect, and by honoring yourself as well, okay, by being an honorable man, you stand up before your vigraha and you feel that energy within you. You don't बिकम ए स्लेव एंड जाके मांगना कि भाई भगवान मेरा ये कर दे तो 10 रुपए का नोट दे दूंगा। नो, दैट इज नॉट सनातन, दैट इज नॉट पेगन कल्चर, दैट इज नॉट हिंदू धर्म। You look at the eyes of your God and you feel as honorable and as respectful as your God. ठीक है, तो ये सब तो ऑब्वियसली ये सबवर्जन हुआ है ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बट ये फिर से वापस लाना है हम लोगों को, और हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, और शायद लोगों तक पहुंचेगा ये सब चीजें। Yeah, so we'll take the final comment, not a question. Like I mentioned, where the Abrahamics and leftists have combined together, society has fallen into a chaos, and we are seeing correct, all across the globe, France, Britain, in Netherlands. Okay, we are seeing the kind of chaos we see right now, and that is being primarily done by two specific forces. Okay, the Right. atheists and the liberals. Liberals. So now, uh, if from your perspective, because you have done the research, you have wrote a book, you are going to write a second book on the same topic itself. As a common man, as a common citizen who is listening to this podcast, or may listen to this after the recording itself, what would be your three things that a common Hindu, a Hindu means doesn't mean Indian. Hindu means who believes in Sanatan Dharma. He can be sitting in Europe, Right. America, wherever they are. Correct. Whoever who believes
in the eternal aspect of Sanatan Dharma, they are Hindus. Hindus. Okay. So it doesn't really matter which race or which place they belong to. So, what three things they can do in their own capacity as an individual? We are not talking about the institution because it takes time. It takes time, maybe 100 years to build institutions. It's not done in a Right. one day. But as an individual, what they can do at their local level, so that they can actually have a sense of community and cohesive architecture, cohesive Right. action, cohesive feeling about them as a family or as a community, that they can do. Right. Right. So your question is very much community specific right now. So I will Yes. address it Hmm. with 3 points. First Hmm. point is procreate. Hmm. You don't have a community until unless you manage to procreate kids, right? Hmm. Um, and obviously, along with it, matlab, if you have kids, then just like you and your brother or your sister are taking care of your parents, then your parents will grow older, you will grow older. Your If you have, let's say, only one kid, let's say you get married to your woman, and then you have one kid. That single kid will have the responsibility of four families, right? If you consider nuclear families, that single kid will have to take care of you and your wife. I mean, his or her father and mother. Then the dadu, matlab the grandmother, grandfather. So ye do family on the mother side as well. So just imagine the pressure if you create only a single kid. It is not healthy. Okay. So you should create kids, um, or see, if you are investing your time and money on raising one child, why don't you create more than one, right? If you have some amount of, let's say, wealth, to sort of raise them properly. So procreation is obviously, in the context of community, you have to procreate. It is not a very conservative or very atavist primitive thing that I'm talking. I'm talking sense. Okay. I'll add The one more thing. I'll add just one aspect of it. In terms of economy, correct? Our modern society, even the ancient society, had an economy, correct? You cannot have an economy if your population is going down, okay, or you are not replacing your existing population. So you don't have nothing actually. Like if you exactly. see rationally as well, rationally, if there are 100 people, for 100 people, you will have hospitals, you have shops, you will have shopping complex, you will have trains, transport. Everything depends upon you buying a ticket, you buying a food, you are going And to a someone running it, pilgrimage, someone driving it. someone driving it. So I don't know how dumb people have become to actually think critically that if you are not going to have replace the population, as of now, the only option is to like have kids. Okay, once you have robots, you can go ahead and do that one. Okay, right now it's not possible. So right now, if you want to save your community, save your society, and see that the society continue and functions in a functional way, you need to have at least like a TFR of 2.16 so that you can get the population replaced. Okay, having more is good, but it's rationally and economically a very bad argument not to have kids. I don't know where people get this thing. So go ahead. Right. Second point is education, right? Obviously, Hindu kids will excel in education. It is more likely than any Abrahamic kid excelling in education. Along with the standard education, you teach three, four things. I'm not asking for much. One is Gita, to build up the confidence. And you can read Gita at different age, and the interpretation will hit you differently. Okay. Like I first read it when I was in sixth standard, it hit me differently. When I read it now, it hit even in a very different way. So first one is Gita. Second one is Kathopanishad. Okay, the conversation between Yama and Nachiketa. Okay, small. It's not a very big Upanishad, but you teach it. मांडुक्य वगैरह तो पढ़ सकते हो, बट कठोपनिषद तो पढ़ा दो, बाकी तो भक्ति का है. But Kathopanishad is very much empirical, okay, and meta scientific, so to say. तो कठोपनिषद पढ़ा दो, गीता पढ़ाओ,
और रामायण महाभारत का तो इवन आजकल इस फॉर्मेट में आता है, अपना जो कॉमिक्स फॉर्म में जो है, कॉमिक्स फॉर्म में लोग पब्लिश करते हैं। तो इतना तो पढ़ा दो, ठीक है, कॉमिक्स फॉर्म में रामायण महाभारत पढ़ा दो, क्योंकि पूरा तो लोग आजकल पढ़ते भी नहीं है, कितने सारे कहानी है। और ये 3 बुक पढ़ा। देयर आर मेनी स्टोरीज दैट आई कैन स्पेसिफिकली टेल, लाइक सत्यवान सावित्री। बट आजकल तो वही बात है कि ये सब चीजें बचपन से दिमाग में डाल दो कि यस, देयर कैन एग्जिस्ट एन आइडियल फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप दैट इज कॉन्सीव्ड इन हिंदू लिटरेचर। ओके, ये सब पढ़ाओगे, फिर ये जो मतलब जो टॉक्सिक फॉर्म ऑफ फेमिनिज्म है, विच ओनली टॉक्स अबाउट राइट एंड नॉट अबाउट ड्यूटीज, ये बुक पढ़ाने से एटलीस्ट लड़की का क्या ड्यूटी है, एक द ड्यूटीज ऑफ मैन एंड वुमेन, दोज विल बी वेरी मच सॉर्ट ऑफ well conceived and sort of in a well compiled way. It can be conceived by a very a child or any individual, ठीक है। तो ये गीता पढ़ा दो, कठोपनिषद पढ़ा दो, छोटा सा ही है, और बृहदारण्यक उपनिषद तो पढ़ा सकते हो, बट वो थोड़ा अगर बड़े होके पढ़े तो ठीक है, बट कठोपनिषद, गीता एंड रामायण महाभारत का कॉमिक्स। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। आई एम नॉट आस्किंग मच, ट्रस्ट मी। ठीक है। और हाँ, तीसरा पॉइंट यह हुआ कि टू स्टैंड अप फॉर अनदर हिंदू, ये स्कूल लेवल से चालू होना चाहिए। ठीक है, कि जो बंदा मतलब हिंदू सोसाइटी में ये आ गया कि ये इसका दोस्त ही है, इसका रिजल्ट खराब होता है तो इससे इसके साथ खेलने कूदने नहीं देना है। नो, एक क्लास में जितने सारे बंदे हैं, अपने बच्चों को सिखाओ सबसे, सबके लिए खड़ा होना है और एज ए यूनिट काम करना है। ये नहीं सिखाना है कि भाई उसको नोट्स दे दिया तो वो फर्स्ट आ जाएगा तू सेकंड है। नो, राइट नाउ इन इंडिया वी हैव एनफ रिसोर्सेस, एनफ पोजीशंस that can be filled in by the upcoming generation, right? तो ये यूनिटी जब क्रिएट करोगे, इट विल पुट मतलब थ्रस्ट अपॉन द वर्क कल्चर एज वेल। इंडिया में ऐसा वर्क कल्चर है, जैसे मैं काफी टाइम बोलता हूँ कि इंडियन मैनेजर्स फॉर एग्जांपल इन अ कंपनी, दे don't stand up for their team members. In fact, they are chosen in such a way by some MNC, some other manager outside India, in such a way कि they get a bootlicker। ठीक है। तो ये जिम्मीउड खत्म करने का, इंडियन हिंदू माइंड से जिम्मीउड खत्म करने का तरीका यही है कि बच्चों को सिखाओ कि क्लास में जितने भी बच्चे हैं, यू आर वन। ओके, और कुछ भी हो जाए, मतलब यू हैव आवर बैक, बट स्टैंड अप फॉर योर फ्रेंड्स, नो मैटर हाउ बैड ही और शी इज एकेडमिकली, नो मैटर क्या चल रहा है, क्लास का सबसे पीछा, मतलब पीछे बैठने वाला, पढ़ाई ना करने वाला बंदा हो, कोई भी टॉपर भी होगा, वो लास्ट बंदे के लिए खड़ा होगा। और ये अगर इतना सा मैसेज अगर चला गया एक बच्चे के अंदर, इट विल ब्रिंग अ ह्यूज रेवोल्यूशन टू एलिमिनेट द जिम्यूड फ्रॉम अ हिंदू माइंड। ये 3 चीज मैं बोलूंगा, मैं आई एम नॉट आस्किंग मच। Thank you. I think I'll finish this by just showing you what you have told us. So let me just share my screen. So let me share the. Okay, I'll go one by one. So for people who are listening to this in India and outside India, like if you are looking for resources to actually how to read and where to read and do more research, so UP government has created this website called ayodhya.org.in. Okay. So this is in Hindi by default, but actually you can use the translation feature in Chrome and in the browser to actually convert it into an English page. And here you will see what are the initiatives taken by, and you will find Ramayan and its associated documentation programs in various languages. So there are publications, there are Ram Katha in various languages are there. So people who are interested in that, you will find a lot of resource available related to Ramayana itself. So it's in English, if you see it's in Hindi, but you can go ahead and just do the translation. It will
come up in English. Okay. Second is you mentioned about reading Gita. So to read Gita, you don't need to spend a single penny. You just need a recharge, okay, a mobile data recharge, and you can read almost all the Gitas in all the languages free of cost on the phone or on your computer. So it doesn't cost a lot of money to do that. What is been suggested by Bijita. Okay, and also regarding Kathopanishad, so the Chinmay Mission Kathopanishad is one of the best. There are many other books, but personally, I like the Kathopanishad published by Chinmay Mission. This is also available free of cost. Don't have to spend money. Download and read it, and also read, and also other people to also to read it. The last one is, which is very important, which is a community building effort, which I was talking about. So that we have a organization called KOHNA, okay, Coalition of Hindus of North America. So they have created a lot of sub organizations or downstream organizations to actually help and also educate Hindu kids and also Hindu parents. So there is a specific website called hinduparenting.org, and here there is a specific programs free of cost. There are guides Right. where there are podcasts, there are classes, there are blogs where a Hindu parent is taught, given resources, how to bring up a child in a dharmic way that he doesn't fall into the traps which are being now there by from the Abrahamics to actually do more harm. Okay, so you can actually you have the resources available now. Don't have to spend money, a lot of money. Just spend time and read about it. So you'll be able to actually help your child, help your community, and help your family to become better cohesive in their approach towards their dharma, their lifestyle, and in the way save this heritage for the next generations. So by finishing this, we will be ending today's live stream. Thank you, Bijit, for your valuable Thanks. time. It was really Thanks a an lot. enlightening talk today. Not a lot of questions, but I think we learned a lot in terms of Right. how things are and how it could improve. So I think you have given me. I was bit, let's say, black pilled about it. Okay, but I think now I am not in that black pill, so that there is some hope for us in coming Right. 100 years. Okay, that something good might come up in our future. Okay, so thank you. So namaste, Jai Shri Ram, Vande Mataram. We'll see you again in our next stream. We will Right. discuss something more topics. So we will be reading. We will be in our next stream. We will be reading the Krittivas Ramayan that we will be reading in our next stream. So do join us. So Right. Bijita will be reading the Krittivas Ramayan in Bangla for all of us. So it will be a very enlightening session that as well. Right. Yeah. Sure. Thank you very much. Thank So you. say goodbye to everybody. Bye bye. Thank you. Good night. Bye. Good Good evening. night. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram.